welcomes you to witness an impactful conversation with the newsmakers who matter in the city of dreams. Join us on 10th September 2022 as Devendra Fadnavis, Aditya Thackeray and Kartik Aryan share their thoughts and views. CNN News 18 Town Hall in Mumbai, today 6 p.m. onwards. And frame discourses that guide our thriving nation. I'm Anusha Soni, your host for today evening. After a hugely successful inaugural town hall in Delhi, we are here in Mumbai, the financial capital of the country, to take forward meaningful conversations. These conversations that you hear on this stage today is the extension of our meaningful journalism. It's an effort to fulfill our role as a key pillar of Indian democracy. From politics to policy, from the changing paradigms of governance to the dynamic reality of Indian cinema and entertainment, you would hear the key thought leaders and prominent voices on this very stage today. We're in a dynamic phase today, undergoing critical political and cultural changes. The last 8 years have changed a lot. It's an opportunity like no other in many ways. In the history of modern independent India, where we have completed now 75 years. It's a growth story that shall be the dominant theme in this town hall today, where we present to you these specially focused conversations. Today's gathering is also enriched by the presence of leaders from across the sectors. We have the top cops, bureaucrats, and corporate leaders in this wonderful gathering. I extend a very warm welcome to all of you. Thank you so much for being here. You could have a huge round of applause for all of you. I also take this opportunity to thank our sponsors, co-presented by Reliance Industries Limited and Axis Bank, associate sponsors Hyundai Kona Electric and 99 Acres. To tell you more about our goal and objectives, I invite our managing editor, Zakar Jacob, on stage for the welcome address. Good evening, Mumbai. Thank you very much for turning out in such large numbers for the CNN News 18 Town Hall in Mumbai. As my colleague Anusha said, this is the very first time that we are taking the town hall outside of Delhi. And for the very first time, we are fortunate at CNN News 18, at Network 18, to be hosting this in the city of dreams, the city of Mumbai. So thank you very much for being the beautiful city and the beautiful citizens of the city that you've always been. You have been tremendous hosts to us. It is our good fortune that we have moved the town hall first outside of Delhi to Mumbai, and we are glad that we have in our midst. I'm glad that the very first speaker in our midst is the Honorable Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji. Thank you very much for honoring our commitment, for honoring your time with us here. The CNN News 18 Town Hall is a platform that was designed so that there are interactions with thought leaders from the political spectrum, from the world of cinema, from, of course, the world of sports, and how can we not forget people who have been technological pioneers. It's the idea of the town hall is to bring all of them together, give them a platform where they can exchange ideas, because ultimately what we envisage through the town hall is a better future, a better vision of where we individually as well as where we stand collectively as a nation. Like my colleague Anusha said, a lot has changed in the last 8 years. We are today officially, India is the 5th largest economy in the world. It is not a small achievement. And this is just the beginning, ladies and gentlemen. So through the town hall, what we envisage is how do we take India from number 5 to number 4 to number 3 and eventually to the number 1 economy in the world. That is our vision, that is our mission, and we need all of us, 1.3 billion Indians, to join hands in that collective endeavor. So through the course of the next 3 hours, you will hear, like I said, from thought leaders in the world of politics, in cinema, in sports. And Mumbai has a very special place in this. Let's be very clear about it. If India has to reach
5 trillion and 10 trillion, then the biggest contribution will necessarily have to come from Mumbai. That's why the town hall is in Mumbai. That's why Mumbai is important, because if Mumbai does not succeed, India will not succeed, and that's why we need you to put forth your ideas here at the CNN News 18 Town Hall. It's also a great pleasure for me to inform all of you that CNN News 18 is now the #1 news channel on television as well as on YouTube. So we have a small AV for you. Please bear with us. This is danger at our border. Lawrence Bishnoi plotted Moosewala's murder. India's most watched and respected news channel, CNN News 18, believes in investigation, not incitement. Forceful substance was given to Sonali Fogart. The most striking primetime lineup in English news television News is about stories. that believes in adding intensity Biggest issue that we don't have a concept of nationhood. when others thrive in infamy. It has not been about a particular religious community. You don't want to accept the truth, you never solve the problem. India's most sought-after newsmakers turn to CNN News 18. You may get a new challenge. It may ask much more of you. But I think if you're fundamentally a competitive person, you actually enjoy the challenge. A testament of trust in the incredible news institution. $100 billion target with obtained with Australia excluded. CNN News 18 has positively disrupted the ecosystem, ushering in a new era of news broadcasting. Ever since TV ratings returned after a year, CNN News 18 has towered over all its rivals for a staggering 20 weeks. CNN News 18 has emerged as the undisputed #1. Channels that claimed to have dominance, dwarfed by CNN News 18, revealing the real picture of news TV ratings. The numbers speak for themselves. CNN News 18 creating history with an unprecedented gap over its rivals. That's not all. CNN News 18 is revolutionizing the news space by becoming the first channel to enter an integrated news ecosystem that is exploding on the digital sphere. A record-breaking, internet-shattering simulcast of Nancy Pelosi's Taiwan visit. For China, the minute Nancy Pelosi landed in Taiwan, according to them, the damage has already been done. Triggering a YouTube storm on the day the Twin Towers were demolished. The Super Twin Towers, no more. They've been detonated. A budget coverage that smashed YouTube records with phenomenal concurrent views. The finance minister has forgotten the middle class. Tonight, CNN News 18 promises India that its passionate team is all set to transform India's news landscape with utmost integrity and a quest for constant innovation. Welcome to CNN News 18 Town Hall, a platform that envisages a new future for a new India. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause for CNN News 18? I'll just take 10 more seconds. You just saw the AV about our viewership on YouTube just earlier this afternoon, and it gives me great pleasure in informing all of you. Just earlier this afternoon, for the proclamation ceremony of the new King of England, we have made a world record 1.66 lakh concurrent viewers on YouTube. Not BBC, not Al Jazeera, not CNNI, not Sky News, but CNN News 18, an Indian broadcaster, and that is something we are very, very proud of and very, very humble for. Thank you very much. Hope you enjoy the rest of the evening. Well, it's time for our first session. And as I said earlier, we are honored to have Mr. Devendra Fadnavis with us here in the gathering. Thank you, sir, for being a part of this gathering. Before we play that short clip, Mr. Fadnavis is somebody who's known in politics for the tremendous journey he's had. From a student leader
to the youngest mayor of the city of Nagpur, and of course the second youngest chief minister of the state of Maharashtra. He is also known as an able administrator and a no-nonsense politician. Someone with an education in law and management, it's no wonder that he has a firm grip on politics and policy both. He's led the state of Maharashtra during some of the toughest period. His story has many firsts and much more to be added. Here's a short clip on Mr. Devendra Fadnavis. Prodigal son of Maharashtra, selfless Swayam Sevak, no-nonsense administrator, natural troubleshooter, and a Neta with mass appeal. Devendra Fadnavis has created a new benchmark in Maharashtra politics. From being the youngest municipal mayor at the age of 27 to becoming the second youngest chief minister of the state, this Karyakarta rose up the ranks in BJP with hard work, humility and honesty. An excellent orator from his student days, his sharp political acumen combined with flawless communication won him fans within the party and outside. In 1999, Fadnavis was elected to the Maharashtra Assembly and became the BJP's biggest voice of criticism against the Congress-NCP combine. For the next decade, he captured the mind space of the public and his party bosses with relentless commitment to the party's expansion and growth within the state. And in no time, he was groomed to be the chief ministerial candidate with the son's backing. In 2014, he stormed to power, a Brahmin leader in Maratha territory. His role as the CM was challenging. But with each crisis he faced, whether it was the Maratha quota agitation or the farmer protests, Fadnavis excelled in resolving the disputes. A visionary CM, he focused heavily on the agrarian sector, conceptualizing Jalayukta Shivir, a water management scheme for farmers. Fadnavis envisioned a modern Maharashtra with a whopping allocation of rupees 2.6 lakh crores for infra projects like Mumbai Metro and Samruddhi Mahamarg. From being only the second CM of Maharashtra to complete a term, to now being the deputy CM of the state without compromising the ideology of the party, Fadnavis has become a role model for many. Welcome Shri Devendra Fadnavis ji to CNN News 18's Town Hall. I now invite Mr. Devendra Fadnavis and my colleague Anand Narasimhan to start the first session. Anand will moderate this session with Mr. Fadnavis. Big round of applause for Shri Devendra Fadnavis. And I'd like to say Namaste and Jai Hind. Thank you very much. Let's begin. Devendra ji, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा. Devendra ji said he's going to answer all the questions in Hindi. So with your indulgence, I'm going to ask the questions in Hindi. तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, 5 ट्रिलियन का ख्वाब है, that Zaka also mentioned. एक स्टेट ने तो कह दिया 1 ट्रिलियन. महाराष्ट्र कितना कर सकता है? 1 ट्रिलियन कहने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र था और 1 ट्रिलियन पहुंचने वाला भी पहला स्टेट महाराष्ट्र होगा. अब इसी से जुड़ा दूसरा सवाल. 5 साल के आपके कार्यकाल में आपने बहुत कुछ किया. वाटर कंजर्वेशन को लेकर किया, क्राइसिस मैनेजमेंट किया, डेवलपमेंट के लिए किया, मेट्रो का काम, कोस्टल रोड मुंबई में काम. उसके बाद जो हुआ तो उसमें महाराष्ट्र आगे बढ़ा है कि पीछे आ गया है? आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है पिछले 2.5 साल का? देखिए, ऐसा है कि पिछले 2.5 साल के बारे में आपने पूछा.
तो मैं इतना ही कहूँगा कि 2.5 साल में क्या हुआ, ऐसा अगर किसी भी आम नागरिक को हम पूछे तो उसको पता ही नहीं है क्या हुआ। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हमने महाराष्ट्र में शुरू किए थे उनमें से कुछ को बंद कर दिया गया, बाकी कुछ चल रहे हैं। एक भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ महाराष्ट्र में। हाँ, एक बात ज़रूर हुई और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि महाराष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत सटीक माना जाता था, और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जो पुलिस है और मुंबई की पुलिस है, इसका देश और दुनिया में बोलबाला था। किंतु जिस प्रकार से घटनाएं महाराष्ट्र की पुलिस में घटी और होम मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा, और जिस प्रकार से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का स्कैम हुआ, इससे निश्चित महाराष्ट्र के पुलिस की प्रतिमा पर एक दाग लगा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, दाग लगाने को तो 1 साल लगता है, पर दाग मिटाने को कई साल लगते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग पीछे गए, न कोई नया निवेश आया, न कोई गति बढ़ी। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा कहूँगा कि पिछले 2.5 साल में जो सरकार थी वो सरकार अपनी कोई अचीवमेंट बता नहीं सकती है। बोलने को तो 4 चीज़ें वो बोलेंगे, पर एक भी ऐसी चीज़ जो महाराष्ट्र को आगे ले जा पाए ऐसी उस सरकार में नहीं हुई। केवल भ्रष्टाचार और महिमा मंडन खुद का, इससे ज़्यादा वो सरकार कुछ नहीं कर पाई। मुंबई पुलिस कमिश्नर बैठे हैं, सो द टास्क इज कट आउट फॉर यू सर। पर कल गणपति विसर्जन में आपने कहा नो होल्ड्स बार्ड, और इतना बढ़िया विसर्जन हुआ है, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं आपको लगता है थोड़ा तो देखिए, आवर फोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट फोर्स इन द कंट्री। और मैंने 5 साल में गृह मंत्री इससे पहले रहा हूं, और मुझे मेरे फोर्स पर फक्र है। इसलिए जब मैं वो परिस्थिति देखता था, और उसके लिए हम पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो अगर पैसे ले लेके अनडिजर्विंग लोगों को पोस्टिंग देगी, सारे अनडिजर्विंग थे ऐसा नहीं कहता हूँ, पर कई की पोस्ट पर अनडिजर्विंग लोग जब लाए गए और जब वसूली के टारगेट दिए गए, 100 करोड़ रुपया वसूल करके लाना है, तो क्या होगा। और अब मैं मानता हूँ कि यही पुलिस है जो आने वाले दिनों में आपको बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखेगी। बिकॉज हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में पॉलिटिकल लीडरशिप का एक अपना रोल होता है, और वो रोल अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ठीक से निभाए, हमेशा एक हमारे पुराने मुख्यमंत्री थे, वे हमेशा कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो घोड़े के समान होती है। उसके ऊपर बैठकर आप भाग भी सकते हो और उसको सिर पर बैठाकर जमीन पे बैठ भी सकते हो। तो हमने तो ब्यूरोक्रेसी पर बैठकर भागना ही सीखा है, और हम भगा के दिखाएंगे। तो यानी आप यहाँ बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं, यस और नो? हाँ, यस। अच्छा, लेकिन ये कहा जाता है कि मुंबई मॉडल कोविड मैनेजमेंट की पिछली सरकार में कोविड बहुत अच्छे से किया गया था, मैनेज किया गया था। डू यू एग्री, डिसएग्री? कोविड अच्छे से मैनेज हुआ कि नहीं पता नहीं, पर कुछ इंटरनेशनल अखबारों में न्यूज़ अच्छे से मैनेज हुई, वो मैंने देखा। और ये भी मैंने देखा कि जिसने कोविड के मैनेजमेंट पर प्रश्न पूछा उनको जेल भी जाना पड़ा। ऐसे कई मेरे जर्नलिस्ट, पत्रकार मित्र हैं कि जो जेल में जाते हुए हमने देखे। देखिए, मेरा सवाल इतना ही है, यू हैव अ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन विथ 80,000 करोड़ रुपीस डिपॉजिट इन द बैंक, जिसके पास मेडिकल कॉलेजेस है, जिसके पास बेस्ट ऑफ द सुविधाएं है, सारी हेल्थ की सारी सुविधाएं है, बावजूद उसके आप पेशेंट में नंबर 1 हो, आप मौत में नंबर 1 हो, और आंकड़े छिपाकर भी नंबर 1 हो। जब आंकड़े निकलते हैं तो ध्यान में आता है कि आपने आधे आंकड़े तो छिपा दिए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसके पास इतने रिसोर्सेस है वो अगर इस प्रकार से परफॉर्म करता है तो इसके लिए हम उसको शाबाशी दे या उसको प्रश्न पूछे। सवाल इतना ही है कि सारे कोविड के दरमियान सरकार फेसबुक लाइव थी और पब्लिक डेड थी, ये अवस्था हमको देखने को मिली।
कोई रास्ते पर नहीं आ रहा था। जब सरकारी रास्ते पर नहीं आएगी, मैं विपक्ष का नेता था, मैंने 3 चक्कर पूरे महाराष्ट्र के लगाए, हर जिले में गया, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया, हर आईसीयू में गया। 2 बार मुझे कोविड हुआ, लेकिन जनता का आशीर्वाद था, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक बाहर निकला। लेकिन ऐसे क्राइसिस के समय अगर सरकार केवल फेसबुक पे होगी तो फिर जनता की सुर लेगा कौन? और इसीलिए आप देखिए सारे आंकड़ों में, अगर हम अनुपात की भी बात करें तो महाराष्ट्र ये करीब 10% पॉपुलेशन है, देश की पॉपुलेशन का 10% हिस्सा है, और मौतों में हम लोग 20% है, कभी 25% है, पेशेंट्स में हम 30% तक गए। तो मुझे लगता है कि ठीक है, देखिए मेरे राज्य के बारे में मैं कुछ बुरा बोलूं, सरकार किसी का भी रहे, ये मुझे पसंद नहीं है, इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। 80,000 करोड़ का डिपॉजिट आपने कहा। आशीष शेलार जी भी यहाँ हैं, नमस्ते। बहुत सारे परिचित दिख रहे हैं, मुंबई नगरी आते हैं तो सब हर जगह दोस्त ही मिलते हैं। बट देवेंद्र जी, आई वांट टू आस्क यू, 80,000 करोड़ का डिपॉजिट आपने बताया, तो मुंबई शंघाई बन सकती है? मुंबई को शंघाई क्यों बनाए? मुंबई मुंबई है, मुंबई का अपना एक कल्चर है, मुंबई की एक अपनी अलग प्रकार की रचना है। मुंबई को मुंबई ही बनाएंगे और शंघाई से अच्छा बनाएंगे, और वो बनाया जा सकता है। ये मुंबई शंघाई वाली बात भी इन्होंने ही कही थी, अब मुंबई मुंबई वाली बात भी यही कह रहे हैं। नहीं जी, मुंबई शंघाई वाले हमारे पीछे वाले कह गए थे, जिन्होंने मुंबई में एक भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। अब एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये युति टूटी कैसे? ऐसा है कि जब एस्पिरेशंस ये क्षमता के बाहर निकल जाते हैं, देखिए हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है, लेकिन अपनी क्षमता से ज़्यादा कई बार उसके एस्पिरेशंस हो जाते हैं। तो ऐसे समय आदमी फैसले करता है। तो हम तो अलायंस में लड़े, और जिस समय अलायंस में लड़े, हर सभा में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, हमारे अध्यक्ष जी हो, सबने ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ रहे, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तब स्टेज पर उद्धव जी थे, वो भी ताली बजाते थे, उन्होंने भी कई बार कहा मेरे नेतृत्व में चल रहा है। अब बाद में रिजल्ट आने के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो इसलिए मैंने कहा कि क्षमता से बड़ा एस्पिरेशन हो गया, क्योंकि उनके तो चुनकर आए थे 56, हमारे चुनकर आए थे 105। हम जितनी सीटें लड़े उसमें हमारे 70% चुनकर आए, वो जितनी सीटें लड़े उसमें 42% चुनकर आए। तो इसका सीधा मतलब ये था कि हमारे कारण उनको मैंडेट मिला था, मोदी जी के चेहरे के कारण उनको मैंडेट मिला था। लेकिन उस मैंडेट को नकार कर मुख्यमंत्री बनने की एस्पिरेशन के कारण उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना ठीक माना, तो युति टूट गई। पर कई लोगों का ये कहना है कि आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। देखिए, बिकॉज देयर वर पीपल हु वांटेड टू समवेयर कट देवेंद्र फडणवीस टू साइज, क्योंकि 5 साल चीफ मिनिस्टर बन के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता उभर के आए, तो कुछ लोगों को लगा कि भाई उसको संभालने दो। मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे कट टू साइज करने का प्रयास केवल अपोजिशन वाले कर रहे थे। मेरी तो तमाम पार्टी मेरे साथ थी, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़े, और इस चुनाव में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व था, और जिस प्रकार से सेंट्रल बीजेपी, चाहे वो हमारे अध्यक्ष जी हो, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हो, चाहे रक्षा मंत्री जी हो, ये सारे के सारे लोग पूरी ताकत के साथ हमारे पीछे खड़े थे, और इसी के कारण हम लोग जीते भी। मैंडेट वाज ऑन आवर साइड, हम लोग तो मैंडेट लेकर आए थे। तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए, ये तो हमारे देश में क्या होता है, अगर ऐसी स्टोरीज नहीं बनाए तो खबरें नहीं बनती। अभी इतने न्यूज़ पोर्टल बन गए, अभी इतने न्यूज़ चैनल बन गए, अभी इतने डिजिटल न्यूज़ मीडिया बन गया है, तो सबको कोई ना कोई खबरें चाहिए। और हमारे देश में क्या होता है ना, कॉन्स्पिरेसी थियरी आप तैयार कीजिए तो बड़ी बिकती है, वो तो बिक रही है, बिकने दीजिए। तो आप कह रहे हैं सिर्फ कंस्पिरेसी थियरी, उसके आगे कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, ये कई लोग ये भी कहते हैं कि ये जो पलट हुआ है उसके भी चाणक्य आप ही हैं। देखिए, मैं चाणक्य वगैरह तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित ही ये जो सारा हुआ है इसमें एक मेरा अपना रोल रहा है। और हमारे
सेंट्रल के नेताओं का उसमें बहुत साथ मुझे मिला। विशेष रूप से हमारे जो गृह मंत्री है अमित भाई शाह, वो बहुत ताकत के साथ हमारे साथ इस सारे ट्रांजिशन में हमारे पीछे खड़े थे। और मोदी जी का आशीर्वाद तो हमको था ही, लेकिन मोदी जी नॉर्मली इस प्रकार की गतिविधियों में सहभागी नहीं होते हैं। उनका आशीर्वाद हमको पूरे तरीके से था और मैं ऐसा मानता हूँ कि उसी के कारण देखिए ये जो सारे लोग हमारे साथ आए ना, इनका ये फेथ है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश आगे जा सकता है, वो ये मानते हैं। इसलिए सारे लोग हमारे साथ आए। और देखिए चाणक्य वगैरह तो छोड़ दीजिए, पर कौन एक व्यक्ति जिम्मेदार है इस परिवर्तन के लिए, ऐसा आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा उद्धव ठाकरे। अच्छा, हाँ, तो क्रेडिट उनको ही उनको ही क्रेडिट है, क्योंकि न वो हमसे इस प्रकार से गठबंधन तोड़ते, न वो इस प्रकार की कमज़ोर सरकार चलाते, न उनकी पार्टी में वो अनपॉपुलर होते, न उनकी पार्टी के एमएलएज उनके साथ गठबंधन तोड़ते। ये कुछ नहीं होता अगर वो हमारे से नहीं जाते। तो इसके लिए असली जिम्मेदार तो उद्धव ठाकरे जी है। उन्होंने जो परिस्थितियां तैयार की, जब उनकी पार्टी में उनके सारे एमएलएज को लगने लगा कि हमारा वजूद क्या है, और हम तो बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में हिंदुत्व के लिए लड़ते रहे, और उन्हीं बाला साहब ठाकरे जी को आज जनाब बाला साहब ठाकरे कहना पड़ता है और उर्दू में कैलेंडर छापना पड़ता है। तो ये तो कभी इस प्रकार का तुष्टीकरण, देखिए भाषा का सवाल नहीं होता, तुष्टीकरण का सवाल होता है। इस प्रकार का तुष्टीकरण तो कभी शिवसेना ने किया नहीं है। तो किस मुंह से हम वोट मांगने के लिए जाएंगे? और वो ये भी देख रहे थे कि लगातार उनके बलबूते पर, उनके भरोसे, उनके कांधों पर चलकर कांग्रेस एनसीपी मजबूत हो रही थी। तो मुझे लगता है कि अब ऐसी परिस्थितियां जब होती है तो हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, फायदा तो उसका लेंगे हम, निश्चित ही हमने लिया। तो लेकिन ये जो सारा तैयार हुआ, ये कोई एक दिन में तैयार नहीं हुआ, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के बाद वो हमारे साथ आए। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि धनुष बाण किसने तोड़ा, आप कह रहे हैं देवेंद्र ने नहीं, उद्धव ने तोड़ा। हाँ जी, बिल्कुल 100%। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये एकनाथ जी से संपर्क जब हुआ और आपकी बातचीत चल रही थी, सरकार जिनकी थी उनको खबर तक नहीं लगी, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ही होता है भाई साहब। इसलिए तो जब मुझे कई बार अपने भाषणों में माननीय उद्धव जी कहते थे मेरी सरकार गिरा के दिखाओ, मेरी सरकार गिरा के दिखाओ, तो एक दिन मैंने कह दिया भाई साहब जिस दिन सरकार गिरेगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और वैसे ही हुआ, 40-50 लोग चले गए, पता ही नहीं है उनको कि उनके नाक के तले 40-50 लोग चले गए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। पर देवेंद्र जी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने युति तोड़ी तो मैं तुम्हारी पार्टी तोड़ दूंगा, ऐसा तो नहीं था आपने? देखिए एक बात तो पक्की है कि जिस दिन हमारी पीठ में उन्होंने खंजर घोंपा, उस दिन से ये तो तय था कि इसका जवाब मिलेगा। अब किस प्रकार से मिलेगा ये तो तय नहीं था, वो तो परिस्थितियां बनती गई। और पार्टी तोड़ने का जहां तक सवाल है, मैं वापस कहता हूं इस पार्टी को तोड़ने के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है माननीय उद्धव जी ठाकरे, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। चलिए फ्लैशबैक हो गया, प्रेजेंट पे आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेनी पीपल ऑल्सो से दिस कि आप 5 years CM, longest serving BJP chief minister, second youngest chief minister, now DCM. They see it as a come down. You didn't want to be part of the government. How did that happen? वो कैसे हुआ? देखिए आप कहते हैं कि कुछ लोग दखल नहीं करते हैं, तो क्या उन्होंने दखल किया? ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि आपके चैनल में सीनियर एडिटर भी है, कभी एंकर भी बन जाते हैं, कभी स्पोर्ट्स शो भी होस्ट कर देते हैं जी, कभी रात का 10 बजे का शो तो आपका बहुत पॉपुलर है, वो भी आप उसको होस्ट करते हैं। तो एक टीम होती है, हम टीम बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो टीम बीजेपी में जो जिम्मेदारी मिली, देखिए हम ऐसे ऑलराउंडर है कि हमको नाइट वॉचमैन करके भी भेजोगे तो सेंचुरी मारेंगे, बिना सेंचुरी मारे वापस नहीं आएंगे। तो टीम बीजेपी को आवश्यकता है। हमारे नेताओं ने कह दिया कि भाई आपको सरकार में जाना है और डिप्टी सीएम बना है। तब तक ये बात जरूर है कि मैं मान रहा था कि मैं बाहर रहकर काम करूंगा, लेकिन जब पार्टी ने कह दिया तो चला गया। अब चला गया तो बस जुड़ गया हूं, लग गया हूं, अब करके दिखाऊंगा।
पर आपको मन नहीं खटका थोड़ा कि क्यों ऐसा सब करने को कह रहे हैं? थोड़ा कुछ देर के लिए आपको लगा कि व्हाई आर दे आस्किंग मी टू डू दिस? उसके बाद भले ही आपने कहा कि चलिए जो कहेंगे करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि एकनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात तो मुझे पहले से पता थी, ये तय थी, क्योंकि इसको तय करने वाले जो लोग थे उसमें से एक मैं था। ये प्रपोजल ही ओरिजिनली मेरा था और पार्टी से मैंने बातचीत की थी और पार्टी ने उसको मान्यता दी थी। तो इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला हूँ। हाँ, उस समय मैं ये मानता था कि मैं बाहर रह के काम करूँगा, तो पार्टी ने मुझे ये कहा कि बाहर रह के सरकार नहीं चलती है। और पार्टी ने बहुत सटीक बात कही, उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हम नहीं तैयार करना चाहते। एनएसी जैसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमको ये लगता है कि सरकार को ताकत देने के लिए आपने सरकार में जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, जो पार्टी कहेगी। देखिए, मैं मुख्यमंत्री क्यों बना? पार्टी ने बनाया इसलिए बना ना। करेक्ट। तो देवेंद्र फडणवीस इस नाम को वैल्यू क्यों है? वो वैल्यू केवल इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। तो फिर वही पार्टी या वही नेता जिन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, वो कहते हैं कि पार्टी के हित में आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, तो ये तो मेरा सम्मान है। वो तो ये भी मुझे कह सकते हैं कि भाई आपने बहुत कर लिया, अब घर चले जाओ, तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उन्होंने सम्मान के साथ ये कहा कि आप संभाल सकते हो, आप जाओ। तो मुझे लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 5 मिनट ये मेरे मन पे बोझ जरूर था, और इसलिए था क्योंकि मैं ये अनाउंस कर चुका था कि मैं कोई पोजीशन नहीं लूंगा। ये अनाउंस कर चुका था, इसलिए मेरे मन पर बोझ था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हमारे लिए एक, देखिए किसी को पसंद नहीं आएगा शब्द, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ ईश्वर का आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री जी जैसे नेता हमको मिले हैं कि जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ा बनाते हैं। और जिस प्रकार से इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से 4 शब्दों में, 4 अल्फाजों में एक्सप्लेन कर दिया, मुझे लगता है कि उसके बाद यह सवाल खत्म हो गया कि देवेंद्र फडणवीस क्यों उप मुख्यमंत्री बना। क्या बात है। और आपने भी उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया। पर कहीं ना कहीं आपको हम नेशनल रोल में भी देख रहे हैं। अब आप सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में आ गए, चुनाव में कई सारी पार्टी स्टेट्स में आप इंचार्ज थे जहां आपको सफलता भी मिली। तो ये नहीं, ये बड़ा इंटरनेशनल स्टेज यानी नेशनल स्टेज पर बैटिंग करने की तैयारी हो रही है, नेट प्रैक्टिस। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बहुत नेचुरल कोर्स है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, अल्टीमेटली हर व्यक्ति की कोई ना कोई उम्र होने वाली है, पार्टी के नेताओं की भी उम्र होने वाली है। अब तो हमारी पार्टी में एक उम्र के बाद चुनाव नहीं लड़ना, इस प्रकार का भी निर्णय है। तो सही वक्त पर अगर आप नेतृत्व नहीं बदले तो आपकी कांग्रेस हो जाती है, इतनी गैप पड़ जाती है कि नेता ही नहीं दिखाई पड़ता। तो भारतीय जनता पार्टी में नेचुरल कोर्स में टीम बदलती जाती है, लोगों को अवसर दिया जाता है। अवसर देंगे तो नेतृत्व तैयार होगा। तो इस प्रकार का अवसर मिलता है, तो उसी लीग में मुझे ये अवसर दिया गया है। मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई अभी महाराष्ट्र छोड़ के नेशनल रोल में मैं जाने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं महाराष्ट्र में ही हूँ और महाराष्ट्र में रहूँगा। पर आगे जाके अगर नेशनल रोल कुछ अगर आप करना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे? देखिए, कोई गोल है? देखिए, महाराष्ट्र विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द कंट्री, देयर इज अ बिग रोल। अब आप भी नागपुर वासी हैं, अब नागपुर से तो कितने लोग वहाँ गए हैं, जितनी सड़कें हम देख रहे हैं वो भी एक नागपुर वासी के नेतृत्व में ही बन रही हैं, गडकरी जी हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, इसीलिए तो वहाँ अभी आवश्यकता नहीं है। अभी तो महाराष्ट्र में आवश्यकता है, तो महाराष्ट्र में मैं काम कर रहा हूँ। अब वहाँ मैं क्या जाऊँ और कब जाऊँ और क्या रोल करूँ, पार्टी जिस दिन तय करेगी उस दिन चला जाऊँगा। आज तो पार्टी ने तय किया है कि मैंने महाराष्ट्र में रहना है, तो आज कल की चिंता क्यों करूँ और दिल्ली की चिंता क्यों करूँ, आज तो महाराष्ट्र की चिंता करूँगा। 10 मिनट से कम समय है, तो 2 सवाल मैं लोकल पॉलिटिक्स पे पूछूंगा, फिर एक सवाल है जो जिस पर हम थोड़ा लंबी बात करेंगे। बीएमसी के चुनाव में आपने कहा है कि बीजेपी लीड रोल इख्तियार करेगी। अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे फैक्शन जो है वो आपके साथ हैं। राज ठाकरे जी से भी आपकी अच्छी बातचीत है, मैंने सुना। नहीं, हमारी दोस्ती है, हम बातचीत करते। देखिए, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स जो है ना, ये साउथ से थोड़ी अलग है। ये पॉलिटिक्स जो है, इसमें हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, हमारे विचार अलग है। और इसलिए मैं आज भी
फोन उठाकर उद्धव जी से बात कर सकता हूँ। कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकता तो हूँ। वो उद्धव जी कनेक्शन अभी कट नहीं हुआ? नहीं, देखिए पॉलिटिकल बात क्यों, मैं कोई दूसरी बात कर लूंगा उनके साथ। शरद पवार जी के साथ मेरी बात होती है, मैं आज भी उनसे फोन करके बात कर सकता हूँ। तो राज ठाकरे जी भी एक नेता है, हमारे मित्र है, उनसे बात करने में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैं उप मुख्यमंत्री बना, उसके बाद उन्होंने एक बहुत सुंदर खत मुझे लिखा और इतने सुंदर शब्द थे, तो मैंने विचार किया कि इसका जवाब दूंगा। उतने अच्छे शब्द ही मुझे सूझे नहीं, तो मैंने फिर अनाउंस किया कि मैं उनके घर जाकर उनका आभार व्यक्त करूंगा। मैं उनके घर जाकर उनका आभार व्यक्त किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे लोकतंत्र में जिस प्रकार का एक संवाद होना चाहिए, वो संवाद यहाँ है। तो ये सारे संवाद को राजनीतिक एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और ओरिजिनल शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिंदे जी के नेतृत्व में हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों साथ में बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। तो बीएमसी का चुनाव तो आप साथ लड़ेंगे। अभी तक तो आप कह रहे हैं कि मनसे से अच्छी दोस्ती है राज ठाकरे जी से, पर साथ में कोई युति नहीं। तो क्या यही रणनीति अगले चुनाव के लिए भी होगी 2024 में? हाँ, इससे क्या अलग रणनीति होगी? हम तो शिवसेना बीजेपी साथ में लड़ेंगे। चेहरा कौन होगा? देखिए ऐसा होता है ना कि अभी तो 2-2.5 साल बचे हुए हैं, और जब एक कैप्टन है, वो कैप्टन परफॉर्म कर रहा है, वो कैप्टन खेल रहा है, ऐसे समय नया कैप्टन कौन होगा, फिर कैप्टन होगा कि नहीं होगा, क्यों इस पर चर्चा करें? भाई हमारा कैप्टन खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद बातचीत कीजिए। क्योंकि जो वाइस कैप्टन है वही कैप्टन था पहले, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। नहीं, वो तो ऐसा होता है भाई साहब। देखिए सचिन तेंदुलकर ये मिलेनियम का स्टार है। सचिन तेंदुलकर ये एक ऐसे बैट्समैन हैं जो कभी हो नहीं सकते, लेकिन उनके बाद के कई कैप्टन्स के नेतृत्व में उन्होंने बैटिंग भी की, फील्डिंग भी की, बॉलिंग भी की और गेम खेला। ऐसे ही होता है। क्या बात है देवेंद्र जी, उदाहरण भी चुना तो सचिन तेंदुलकर का चुना कि भाई पॉलिटिक्स के देवेंद्र सचिन तेंदुलकर हमें, बहुत बढ़िया। अब एक विचारधारा पर जुड़े हुए शब्द कि आप, और इस पर मैं लंबी आपसे थोड़ी बातचीत चाहूंगा। एक नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव, हिंदू वर्सेस हिंदुत्व, और खासकर आरएसएस ब्रांड ऑफ हिंदुत्व। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो मुझे पता नहीं हिंदी का शब्द ठीक है कि नहीं, पर जो अनाड़ी लोग होते हैं ना, वही लोग ये हिंदू और हिंदुत्व में भेद करते हैं। देखिए, अगर आप हिंदू है तो आप आत्मा में विश्वास करते हो जी। तो मुझे बताइए कि अगर शरीर से आत्मा निकाल दे तो क्या शरीर बचता है? तो हिंदू से हिंदुत्व अगर निकाल दे तो क्या हिंदू बचेगा? और जिन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की बात की, उनको इतनी गहरी बात नहीं पता चलेगी। इसलिए उनके लिए मैं बहुत आसान शब्दों में बताता हूँ कि अगर हिंदू मोबाइल फ़ोन है तो हिंदुत्व सिम कार्ड है। अगर सिम कार्ड निकालेंगे तो फ़ोन थोड़ी चलेगा। तो उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि हिंदू और हिंदुत्व एक ही चीज़ है, कोई अलग बात नहीं हो सकती है। और आरएसएस का ब्रांड हिंदुत्व किसी का ब्रांड ही नहीं हो सकता भाई साहब। हिंदुत्व ये एक जीवन पद्धति है जो 10,000 सालों से हम लोग इस जीवन पद्धति को जी रहे हैं। इसमें कोई उपासना पद्धति, ये कोई हिंदुत्व का आधार नहीं होता है, क्योंकि निर्गुण निराकार भी हिंदू है, सगुण साकार भी हिंदू है, ईश्वर को मानो तो भी हिंदू है, ईश्वर को न मानो तो भी हिंदू है। हिंदुत्व में अलग अलग प्रकार के विचार है। तो इसलिए ये एक, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी एक जीवन पद्धति है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यही मानता है। तो कई लोग इसको संकुचित विचार के साथ पूजा पद्धति से जोड़ते हैं जी। और सबसे बड़ी बात, हिंदुत्व यानी क्या है? सहिष्णुता है। देखिए, जो सहिष्णु नहीं है वो हिंदू नहीं है। तो अगर हम हमारे देश का इतिहास देखें तो हमारे देश ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, और दुनिया ने जिनको बहिष्कृत किया, परिष्कृत किया, ऐसे सब लोगों को पनाह अगर किसी ने दी तो हमारे भारत ने दी। ये तो हमारी संस्कृति है और यही हिंदुत्व है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उनको देखिए, कई बार तो ये होता है कि जो सोया हुआ है उसको तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको आप जगा नहीं सकते। और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आएगा समझ में। मुझे ऐसा लगता है हिंदू और हिंदुत्व, इसमें कोई भेद नहीं है।
और इसमें भेद करने वाले न हिंदुओं को जानते न हिंदुत्व को जानते। जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप भारत तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप यानी आरएसएस और बीजेपी's ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स एंड हिंदुत्व। देखो, भारत तोड़ने का काम किसने किया? किसने किया भारत का विभाजन? मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 1947 में पहली बार भारत टूटा और भारत के 2 टुकड़े हुए, किसने किया? अब जिन्होंने वो विभाजन किया वही हमको बोलते हैं कि आप भारत का विभाजन करने वाले। अरे हम तो उस समय भी कहते थे कि विभाजन नहीं होना चाहिए, और आज भी हम तो ये कहते हैं कि भारत के टुकड़े करने की बात तो भूल जाओ। एक दिन पाकिस्तान भी भारत में होगा, अफगानिस्तान भी भारत में होगा, बांग्लादेश भी भारत में होगा। अखंड भारत का निर्माण हम करके दिखाएंगे। बहुत लॉफ्टी आइडियल है ये, संघ का कोर विचार भी है अखंड भारत की। अगर आप बात करें, यहाँ ये कहते हैं कि ये कौन होते हैं, ये तो आज़ादी की लड़ाई भी नहीं लड़ी, और इनके जो आइडियोलॉग हैं वीर सावरकर, उन्होंने तो अंग्रेज़ों के साथ उनकी फौज में जुड़ने की बात की, अंग्रेज़ों से उन्होंने गुहार लगाई। ये सावरकर विलिफिकेशन इज इक्वल टू गोइंग आफ्टर हिंदुत्व, तो ये भी होता है। देखिए, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि 11 साल अंडमान की काल कोठरी में कोलू से के बैल के रूप में जुटकर और हंटर सहन करते करते बिना कुछ खाए पिए दिन रात जो सारी प्रकार की प्रताड़नाएं सहन कर रहे थे, और सारी प्रकार की प्रताड़नाएं सहन करने के बाद भी वो क्या कह रहे थे? सागरा प्राण तळमळला, वो कह रहे थे ने मजसी ने परत मातृभूमिला, मेरी मातृभूमि में मुझे वापस ले जा। जिनके मुंह से केवल एक ही चीज निकलती थी, भारत माता की जय। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो ये लोग बोलते हैं सावरकर के ऊपर, इन्होंने एक दिन भी कभी जेल के अंदर जाकर देखा है? कभी एक दिन भी उन्होंने जेल भोगी है? सावरकर को ये समझ नहीं सकते। सच बात तो ये है कि सावरकर जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि कई लोगों को डर लगता था कि अगर सावरकर जी का व्यक्तित्व लोगों के सामने आ जाए तो हम बौने हो जाएंगे, और इसलिए अपने बौने होने के चक्कर में सावरकर जी के ऊपर अन्याय इन लोगों ने किया। आज सारे एविडेंस समाज के सामने, जितने सावरकर जी के ऊपर आरोप लगे वो सारे कैसे झूठे हैं, इसके अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे सामने। फिर भी कुछ लोग सावरकर जी को गाली देने में अपने आप को धन्य मानते। अरे उनको तो सावरकर जी पता ही नहीं है। सावरकर जी छोड़ दीजिए, उनको अगर बैठकर भारत के स्वतंत्रता के इतिहास के 4 नायकों के किरदारों के बारे में पूछा तो उसका भी जवाब वो दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि न उनके ऊपर किसी का विश्वास है, न कोई उनको बिलीव करता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर अभी 75 वर्ष आज़ादी के, उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से नाम लिया सावरकर जी का, और अभी हमने देखा कि जो प्रतिमा आई बढ़िया सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, डू यू थिंक कि भारत अपना कैरेक्टर बदल रहा है? एक पोस्चर चेंज कर रहा है भारत, जहां वो ये कह रहा है कि मैं जो मेरा है उसको लेकर रहूंगा, और लड़के लेना है तो लड़के लेकर रहूंगा। देखिए, बात तो ऐसी है कि हम लोग तो पिछले करीब 60 साल तक ये मानते थे कि प्रतिमाएं 3-4 लोगों की लग सकती है, या एक परिवार की प्रतिमाएं लगनी चाहिए, एक परिवार के नाम। देखिए, उनका भी कंट्रीब्यूशन नकारता नहीं हूं मैं, जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से देश में माहौल तैयार किया गया कि केवल इनके कारण, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुछ नहीं है, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ नहीं है। अब सरकार ये कहना चाहते हैं कि आप तो हो ही, लेकिन ये भी है, इनको भुलाकर भारत नहीं बनेगा। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो 542 रियासतें भारत में शामिल नहीं होती, और ये अखंड भारत जो हम देखते हैं, ये भारत हमको नहीं दिखाई देता। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं होते तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। जिस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से पहली बार भारत की धरती पर स्वतंत्र भारत का झंडा लहराया, और उसके बाद एक प्रकार की जो आग पूरे भारत में लगी, इसके कारण अंग्रेजों को जाना पड़ा।
महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का जो नारा दिया, उस नारे के बाद जिस प्रकार से भारत के अंदर एक आम आदमी भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा, तो ऐसे कई लोग हैं कि जिनके कारण भारत को स्वतंत्रता मिली है। तो ऐसे समय उन लोगों को भी याद करें, न कि केवल 2-3 लोगों को या 4 लोगों को जिनके हर गांव में हमने पुतले इससे पहले लगा दिए हैं, सरकार की सारी स्कीमों को उनके नाम दे दिए हैं और सरकार में उनके सिवा दूसरा कोई सरकार को दिखता नहीं, ऐसी परिस्थितियां है। तो मुझे ऐसा लगता है इट इज नॉट री इन्वेंटिंग, इट इज रिकॉग्नाइजिंग। ये केवल हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इन लोगों का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। सुपर्ब, वेल सेड। अब यहाँ बोल रहे हैं कि समय समाप्त हो गया, पर मैं बस एंड वील थ्रो द क्वेश्चंस ओपन टू द ऑडियंस, और जो भी आप सवाल पूछना चाहें वी विल आस्क। मैं क्विकली देवेंद्र जी आपसे जानना चाहता हूँ, आपके आइडल्स कौन हैं? आप किन को अपना आदर्श मानते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि आदर्श जो होता है ना, वो एक नहीं हो सकता है। कई आदर्श आपके सामने होते हैं जब आप काम करते हो। आज अगर मैं राजनीति में काम करता हूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी है, नरेंद्र मोदी जी है, इनका काम जब मैं देखता हूँ तो बहुत मेरे सामने मुझे राजनीतिक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। अगर मैं भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई देखता हूँ तो उसमें हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया, चाहे फिर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, सावरकर जी हो, या भगत सिंह जी हो, या कई नाम अनाम लोग हैं, या फिर मैं जब सामाजिक क्षेत्र देखता हूँ तो उसमें कई लोग ऐसे हैं कि जिनसे हमको प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किया है वो कार्य, कई बार मैं अचंभित होता हूँ कि ये लोग एक जन्म में, एक जीवन में इतना कार्य कैसा कर सकते हैं, तो उससे भी प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए मैं एक आइडियल नहीं मानता, मैं कई लोगों को अपना आइडियल मानता हूँ। आपने अपनी बीवी का नाम नहीं लिया, अभी घर पे जाके डांट पड़ने वाली है। चलिए, कुछ सवाल और है और कुछ यस एंड नो भी खेलेंगे आपके साथ, बट वी गॉट क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। सो विनय, कैन यू प्लीज हेल्प अस? जी, थैंक यू। Thank you, Mr. Fadnavis, for this speech. I'm a business journalist and I will stick to business, sir. We are looking at a 1 trillion economy. Mumbai's contribution to national taxes is 30%. And yet we are the only city with just 15 kilometers of metro lines. Can you give us some, I mean, we've become a political football, our metro. Can you give us some deadlines and can you advance them? 4 साल पहले 4 साल के बाद मेट्रो मिल जाएगी, ये उम्मीद दी गई। अब भी कहा गया है कि और 4 साल लगेंगे। कैन यू गिव अस सम डेडलाइंस फॉर मेट्रो 3 इटसेल्फ एंड द अदर लाइंस? नहीं, मैंने डेडलाइन सेट की थी, पिछली सरकार में वो डेडलाइंस डेड हो गई, अभी मैंने वापस रिवाइव की है। और आप चिंता मत कीजिए, 285 किलोमीटर मेट्रो का काम शुरू किया है, अगले साल से डिलीवर करना शुरू करेंगे। मेजर नेटवर्क, जो सबसे महत्व की हमारी लाइन है मेट्रो 3 40 किलोमीटर्स की, जो मुंबई की नई लाइफ लाइन बनेगी, अब उसको हम लोग अगले साल 2023 में हम लोग उसको पार्ट 1 कमीशन करेंगे और 2023 के एंड में पूरी लाइन को हम कमीशन करेंगे। उसके साथ साथ जो काम हमने 3-4 साल पहले शुरू किए, ये सारी लाइनें इस साल से हम लोग डिलीवर करना शुरू करेंगे। और आपने अच्छा मौका दिया है, तो मैं कहता हूँ कि देखिए, जब हम राजनीति लाते हैं तो इस प्रकार से हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट्स भी अटक जाते हैं। मेट्रो 3 इसका उदाहरण है कि जहाँ पर हम लोगों ने कार शेड आरए में करने का निर्णय किया, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने मोहर लगाई, उसके ऊपर ग्रीन ट्राइब्यूनल ने मोहर लगाई, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो झाड़ काटने पड़े, ये सारे के सारे झाड़ अपने एंटायर लाइफ स्पैन में जितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे उतना ये मेट्रो 80 डेज में करेगी, 80 डेज, एंड दैट्स व्हाई दे अलाउड अस टू कट द ट्रीज। और आज देखिए, ये मेट्रो अगर शुरू होती है तो हर साल करीब 2.5 लाख टन CO2 एमिशन हम लोग रोक पाएंगे। इतना CO2 एमिशन अगर हमको रोकना है तो मुंबई में फुल ग्रोन 2 करोड़ झाड़ हमको लगाने पड़ेंगे, विच इज इम्पॉसिबल। और जहां पर हम लोग मेट्रो का कार शेड कर रहे हैं, अगर किसी ने आरए को देखा है
तो पूरा आरे जहां खत्म होता है उसके बाद होटल बनाए, उसके बाद हाउसेस बने, और फिर उसके बाद जो छोटा सा हिस्सा है जो बिल्कुल बाहर का हिस्सा है उस हिस्से को हमने मेट्रो कारशेड में परिवर्तित किया है। और सबसे महत्व की बात यह है कि जिन्होंने इसको रोका, उन्होंने जो कमेटी तैयार की, उस कमेटी ने, उनके ही सरकार की कमेटी ने कहा कि इसको अगर रोका गया तो ये 4 साल तो लेट होगा ही होगा, 20,000 करोड़ रुपए से इसका कॉस्ट बढ़ेगा। और आज हम लोग देखते हैं कि इसको रोकने के कारण 10,000 करोड़ रुपए का फटका तो हमको वैसे ही पड़ा है। तो मुझे लगता है कि अब ये सारे स्टे वे सब खत्म हुए हैं और हम लोग इस मेट्रो को अगले साल डिलीवर करेंगे। Well done. मैं सोच ही रहा था कि मेट्रो वाला सवाल छूट गया, फिर मुझे पता ऑडियंस थोड़ी छोड़ेगी, वो तो पूछेगी। थैंक यू लता फॉर दैट। सर, आई हैव अ क्वेरी। जी। माय नेम इज विजय धमाल, आई एम फ्रॉम ऑरिक्स इंडिया। सर, माय क्वेरी इज, सर मुंबई में जितनी पॉपुलेशन है, मोर देन 60% पॉपुलेशन स्लम में रहती है। सर, स्लम ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुंबई का। ये मुंबई के मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी वोट बैंक है स्लम। तो क्या स्लम मतलब रिड्यूस करने के लिए क्या अपने पास प्लान है? सर, दूसरा सवाल ये है कि मुंबई की म्यूनिसिपल इलेक्शन आती है, जब भी हमेशा एक क्वेरी आती है कि ये मुंबई का सब बिजनेस बाहर जाएगा, मुंबई बाहर जाएगी, मुंबई का इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। तो क्या इसके ऊपर आपका आंसर है क्या? थैंक यू सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुंबई का इम्पोर्टेंस कोई कम नहीं कर सकता। आपने बिल्कुल सही बात कही। जैसे चुनाव आता है तो हमारे कुछ साथी बोलना शुरू करते हैं कि मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ देंगे, मुंबई का बिजनेस बाहर जाएगा। देखिए, कोई बाहर नहीं ले सकता। मुंबई इज फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई विल रिमेन फाइनेंशियल कैपिटल, मुंबई इज बिजनेस कैपिटल, इट विल रिमेन बिजनेस कैपिटल, मुंबई इज एंटरटेनमेंट कैपिटल एंड इट विल रिमेन एंटरटेनमेंट कैपिटल। मुंबई का ये जो वजूद है इसको कोई दूर नहीं कर सकता, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जहाँ तक स्लम्स का सवाल है, अभी इट इज़ नो मोर 60%, फिर भी अभी भी 45% लोग स्लम में रहते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने कई स्कीम्स शुरू की है। मुंबई में एक टिपिकल प्रॉब्लम यह है कि मुंबई में चूँकि ये लैंड लॉक्ड है, तो यहाँ पर कुछ स्लम्स जो है ये एयरपोर्ट के लैंड पर है, कुछ स्लम्स ये फॉरेस्ट के लैंड पर है। तो इनको फिर रीसेटल करना एक बहुत बड़ी टास्क है। लेकिन अब जैसे मुंबई का सबसे बड़ा स्लम धारावी, ये धारावी का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट 20 साल पहले शुरू हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने रेलवे की लैंड उसमें प्राप्त किए और उसका टेंडर निकाला। हम लोग करीब फाइनल स्टेज पर पहुंचे, लेकिन नई सरकार आई, नई सरकार ने उसको कैंसिल किया। अब अगले 3 महीने में हम लोग धारावी का रीडेवलपमेंट शुरू करेंगे। और ये जो धारावी का रीडेवलपमेंट होगा या धारावी में जो हम स्लम्स को रीसेटल करेंगे, ये मुंबई में एक ऐसा मॉडल बनेगा जो दुनिया का अपना अनूठा मॉडल होगा। और इसके बाद किसी के मन में ये शंका नहीं रहेगी कि क्या मुंबई कभी स्लम फ्री हो सकती है। हम मुंबई को स्लम फ्री करेंगे, लेकिन उसमें निश्चित बहुत बाधाएं हैं। उन बाधाओं को दूर करने का काम अभी चल रहा है। Okay, we got time for one more question. Yes, that's the last question. देवेंद्र साहब नमस्कार, मेरा नाम है अमित जैन, पोल खोल मीडिया से। सर, मेरा आपसे एक ही सवाल है। आपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद बताया कि सभी पॉलिटिकल पार्टी में आपके मित्र हैं, वो केवल आपके ओपोनेंट है, ना कि दुश्मन। बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन आज विशेषकर जो युवा पीढ़ी है, विशेषकर सोशल मीडिया पर, वहाँ पर राजनीतिक विचारधारा हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो, विभिन्न विचारधारा होती है, वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ झगड़े करते हैं, वो दुश्मन समझ बैठते हैं एक दूसरे को, विशेषकर युवा पीढ़ी। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही। धन्यवाद। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत ही इमर्जिंग इस प्रकार का प्लेटफॉर्म है। और जब भी कोई प्लेटफॉर्म इमर्ज होता है तो उसमें उसके नए वैल्यूज़, उसके नए मूल्य तैयार होते हैं। और अभी सोशल मीडिया के मूल्य तैयार हुए नहीं है। तो कई लोगों को ये लगता है कि टू एक्सप्रेस निगेटिविटी, इसके लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी इस पर एक्सप्रेस होती है।
पर मैं ऐसा मानता हूँ एक संक्रमण की अवस्था है। धीरे धीरे लोग इसको भी समझेंगे और इसमें से बाहर निकलेंगे। अगर नहीं निकलेंगे तो देखिए, जब कोई चीज़ अति हो जाती है ना, तो फिर अपने आप उसमें से कोई रास्ता निकलता है। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी बात कही है। सोशल मीडिया एक एक्सप्रेशन के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ज़रूर है, लेकिन इसका दुरुपयोग करना, इस पर गालियाँ लिखना, इससे एक दूसरे के से झगड़े करना, इसमें हेट एक प्रकार से इससे फैलाना, ये बहुत गलत चीज़ है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी ने इस नए माध्यम के वैल्यूज़ को तैयार करना चाहिए और इसका एक सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। Lovely. One more question from the audience. The lady there. Good evening, sir. I'm Firoza, the bicycle mayor of Mumbai. Sir, आपका एक pet project जो अभी रुका पड़ा है, green wheels along blue line, sir. Sir, उसको आगे लेना जाना पड़ेगा. That's one thing. Secondly, sir, as a cyclist, major concerns, I'm sure all of them have the concern is the pothole problem, sir. I know, I don't want to rant over here, but it's a big concern, sir. Thank you very much. I totally agree with you. Pothole problem is a big concern for Mumbai. And if you look at Mumbai, Mumbai has 1900 kilometers of road network. Out of those 1900 kilometers, now 800 kilometers has been concretized. Once you concretize a road, if the road is transformed into a concrete road, you no more see the potholes. Now we have decided, my Chief Minister Eknath Shinde has given orders to the BMC that in next 2 years, take all the BMC roads and convert them into concrete road. Already tenders for 600 kilometers of concretization have been issued. And although we feel that we want to do it in 2 years, we may take 3 years, but after 3 years, hopefully, at least all the BMC roads will be concretized, and on concrete road, we will not see a single pothole. Having said that, there are not just BMC roads, there are other roads also, which we will have to take. We are also making a scheme for taking the roads which are with other agencies, and we would transform them into concrete roads. So hopefully, in next 3 to 5 years, you will not see a single pothole on Mumbai road. But that is also he's trying to say that in the next 3 to 5 years, you're going to see 100%. There's no doubt. Nobody has doubt. Him in government. That is also something that he's trying to indicate. But चलिए समय कम है सर. तो अब एक छोटा काम करेंगे. ये एक बहुत सिंपल प्लकार्ड है. एक तरफ yes है, दूसरी तरफ no है. इसको आप नीचे यहाँ रख सकते हैं. इस हाथ में आप कुछ कहना चाहें, टिप्पणी, सवाल, प्रश्न पर, तो आप कह सकते हैं. आप डिसाइड करिए, बड़े ध्यान से सब प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा. ठीक है, पहले ही कह देता हूं मिच्छामि दुक्कडम. पहला सवाल रैपिड फायर है, तो ज्यादा सोचिए मत. घर में आपकी सरकार चलती है? उद्धव जी के साथ एक कप चाय पीना चाहेंगे 1 on 1? क्या बात है. अच्छा, कोविड काल में घर में आपने मदद की? डिड यू हेल्प अराउंड द हाउस? अच्छा, एक और बात हो जाए, अमृता जी को पता लगता है कब आप उनसे झूठ बोल रहे हैं? जनता से डर नहीं लगता, पर मीडिया से डर लगता है. 50-50. अच्छा, मोदी जी ने कभी आपको डांट लगाई है? कभी ऐसा लगा कि हो गया यार, पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं? कब लगा, ये तो पूछना पड़ेगा. देखिए, हर एक के जीवन में, आपको भी अपने प्रोफेशन में लगा होगा, बहुत कर लिया यार, आप छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरे दिन आदमी फिर वापस चला ही जाता है ना. ऐसे होता है. पर मैं सच बात बताऊं, मुझे आज तक अभी तक ये नहीं लगा कि मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूं. मुझे इस प्रोफेशन में बहुत प्यार है सर. आई रियली एंजॉय. वो देखिए, आपको किसी न किसी ने लगा होगा, अभी याद आएगा आपको. डांट कब पड़ी, ये बताइए. डांट कब पड़ी? नहीं, डांट तो पड़ते रहती, कभी ना कभी तो डांट पड़ती है. अपने घर के बड़े लोग तो डांटते हैं ना कभी ना कभी. अच्छा, क्या देवेंद्र फडणवीस जी को ओसीडी है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ये ग्लास इधर क्यों रखा है, इधर रखो. नहीं है, वो नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है. ओसीडी नहीं है. अच्छा, एक और जल्दी से 3-4 सवाल है, मैं जल्दी पूछ देता हूं आपसे. ओके, फाइनली, कभी अपना भाषण भूल गए
या नेता का नाम भूले? भाषण भूले कि नेता का नाम? नेता का नाम भूले. कौन थे? अच्छा, ये तो आप जवाब दे ही चुके हैं. तो कभी एक मॉनसून आएगा जब हिंद माता में फ्लडिंग नहीं होगी? Yes, big yes. A very big yes. और लास्ट में, डू यू थिंक? वो तो हिंद माता की फ्लडिंग हमने इसलिए रखी है कि हमारे जो कैमरामैन है ना, उनको इधर उधर भटकना न पड़े. बारिश आ गए तो हिंद माता के सामने जाके खड़े हो जाए तो फ्लडिंग हो जाए. भी वो भी कितने भटकेंगे. अभी ये घूम के इधर आ रहा है सिक्सर. ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न. डू यू बिलीविंग अजीत पवार वाज योर बिगेस्ट पॉलिटिकल ब्लंडर? Ladies and gentlemen, big round of applause to see Devendra Fadnavis. Thank you, sir. बहुत बहुत मजा आया. Lovely. Fabulous. I'd request Mr. Fadnavis and Anand to stay with us. One more round of applause, please, louder. अब खड़े हो गए तो एनर्जी ज्यादा. Thank you very much. Lovely, sir. Thank you. लेकिन आपके आखिरी सवाल का एक और जवाब देता हूं कि राजनीति में कभी कभी ऐसे निर्णय इसलिए करने पड़ते हैं कि जब आपके पीठ में खंजर भोंका जाता है तो आपको बदला लेने के लिए जिंदा रहना पड़ता है. Thank you so much for that engaging session, Mr. Fadnavis. Thank you, Anand, for that session. I now invite our Group CFO, Mr. Ramesh Damani of Network 18 to please come here on the stage and present a memento and felicitate Mr. Devendra Fadnavis. Are you... In 1997, she addressed the nation via live television to express grief over the death of Princess Diana. In 2002, she celebrated her Golden Jubilee of 50th anniversary on the throne. On the 21st of April 2011, on the Queen's 85th birthday, the palace released the Queen's official consent, the instrument of consent to the wedding of Prince William and Kate Middleton. By law, the Royal Marriages Act of 1772, the monarch must consent to most royal marriages. From the 6th of February to the 5th of June 2012, celebrations took place throughout the United Kingdom and the Commonwealth for the Queen's Diamond Jubilee, or the 60th anniversary on the throne. Festivities included a 1,000-boat flotilla along the River Thames and a concert at Buckingham Palace. But troubles within the royal family continued. On the 18th of January 2020, Buckingham Palace announced that Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, are no longer working members of the royal family. As part of the agreement, the couple required to step back from their royal duties, including military appointments, and no longer represent the Queen. On the 6th of February this year, Queen Elizabeth II became the first British monarch to reign for 70 years, extending her record as the longest reigning monarch in British history. Platinum Jubilee celebrations took place throughout the year. But ill health stopped her from attending a Jubilee event at church. She earlier missed the state opening of Parliament and the Derby horse races. This week, outgoing Prime Minister Boris Johnson and incoming Prime Minister Liz Truss had to travel to Balmoral Castle in Scotland because she was not well enough to travel to Buckingham Palace for the handover ceremony. Queen Elizabeth was born on the 21st of April 1926 in London. The daughter of George VI, she was not in the line of succession until King Edward abdicated in 1936. On the 12th of May 1937, Elizabeth attended the coronation of her parents, King George VI and Queen Consort Elizabeth. She was the first female heir presumptive to see her parents crowned. In 1939, when World War II broke out, she moved with her sister to the Royal Lodge at Windsor Castle. This is thought to be the time period when Elizabeth met Prince Philip of Greece. Through the early days of World War II, she was a girl guide and went through the same training as the other girl guides her age. On the 10th of July 1947, King George VI and Queen Elizabeth announced Elizabeth's engagement to Prince Philip of Greece, a lieutenant in the British Navy. After becoming a British citizen and renouncing his Greek title,
Prince Philip became His Royal Highness Prince Philip, Duke of Edinburgh. On the 20th of November 1947, she married Prince Philip. He died in April last year. Her eldest son, Prince Charles, born on the 14th of November 1948, has succeeded her. He is one of the longest waiting heirs to the throne. Queen Elizabeth was the longest reigning monarch. In September 2015, she surpassed the record set by her great-great-grandmother, Queen Victoria, who ruled for 63 years and 7 months. Her other children are Edward, Earl of Wessex, Andrew, Duke of York, and Princess Royal. Of these, Prince Andrew was stripped of his royal duties last year. On the 6th of February 1952, King George VI died of lung cancer, and Elizabeth ascended to the throne. On the 2nd of June 1953, the coronation took place at Westminster Abbey. She visited India 3 times, the first in 1961, the second for the Commonwealth Summit in 1983, and then in October 1997, when demands were made for her trip to apologize for the Jallianwala Bagh killings. She refused to, but laid a wreath, followed by 30 seconds of silence. In December 1995, after heavy media coverage of the estrangement and affairs of Prince Charles and Diana, Princess of Wales, the Queen urged them to divorce. In 1997, she addressed the nation via live television to express grief over the death of Princess Diana. In 2002, she celebrated her Golden Jubilee of 50th anniversary on the throne. On the 21st of April 2011, on the Queen's 85th birthday, the palace released the Queen's official consent, the instrument of consent to the wedding of Prince William and Kate Middleton. By law, the Royal Marriages Act of 1772, the monarch must consent to most royal marriages. From the 6th of February to the 5th of June 2012, celebrations took place throughout the United Kingdom and the Commonwealth for the Queen's Diamond Jubilee, or the 60th anniversary on the throne. Festivities included a 1,000-boat flotilla along the River Thames and a concert at Buckingham Palace. But troubles within the royal family continued. On the 18th of January 2020, Buckingham Palace announced that Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, are no longer working members of the royal family. As part of the agreement, the couple required to step back from their royal duties, including military appointments, and no longer represent the Queen. On the 6th of February this year, Queen Elizabeth II became the first British monarch to reign for 70 years, extending her record as the longest reigning monarch in British history. Platinum Jubilee celebrations took place throughout the year. But ill health stopped her from attending a Jubilee event at church. She earlier missed the state opening of Parliament and the Derby horse races. This week, outgoing Prime Minister Boris Johnson and incoming Prime Minister Liz Truss had to travel to Balmoral Castle in Scotland because she was not well enough to travel to Buckingham Palace for the handover ceremony. Queen Elizabeth was born on the 21st of Well, you continue to stay with those visuals coming in. I request you all to please settle down so that we can start our second session, and please keep your mobile phones on silent. In a country like India, cinema plays a key role. It's a reflection of our soul as a nation. It depicts our strengths, our contradictions, and our conflicts. Cinema also has the power to frame our consciousness. India has a special love and place for its cinema. Artists are revered, celebrated, and sometimes even worshipped. Tonight with us is the young superstar who has successfully carved a niche and place for himself. Someone who has not shied away from experimenting in different genres, whether it's comedy or drama.
There are only few who are celebrated commercially and critically. Kartik Aryan has delivered on both the counts. Kartik, it's a pleasure to have you with us on the show today, and we look forward to a very, very engaging conversation with you. Before that, I'd request to play out the short AV. He's the ultimate outsider success story who's now most sought after by the insider titans of the film industry. सीटे मैं बता रहा हूँ तुझको ये लड़की रॉन्ग है। इतने प्यारे लोग होते हैं कहीं, सब ढोंग है। तेरे खाने से लेके कपड़ों से लेके टूथपेस्ट तक साला वो चुनती है हमारा। अच्छा खासा कोलगेट चल रहा था बचपन से, हर्बल के चक्कर में दिन भर मिट्टी की फीलिंग आती है मुंह में। From being the next biggest thing to delivering on that promise and becoming a bankable Bollywood star who consistently set cash registers ringing with the Pyar Ka Panchnamas, Sonu Ki Titu Ki Sweetie, Luka Chupi and Pati Patni Aur Wo. हमारी पत्नी का चक्कर चल रहा है। What? अफेयर। अपने दीवाने का करके पूरा। And he rocketed to the very top this year by breaking the pandemic spell at the box office with Bhool Bhulaiya 2, the first family entertainer in the post-COVID world that set box office registers ringing. And he emerged as the savior of Bollywood at a time when only movies from the South were thriving. He's a star both online and offline, with 32 million followers on social media, who often follow him in real life too. And he's reduced them to tears with his kindness. The young superstar is loved by the girls, of course, but also by kids, and in fact, the entire family. And it's that lovable factor that sets him apart from the rest. With no airs, just great hair and an ever-ready smile, he's Mr. Congeniality, proving that sometimes nice guys do finish first. We look forward to that wonderful conversation. I now invite Kartik Aaryan and my colleague Shilpa Ratnam for a session here. My colleague Shilpa will moderate this session. Ladies and gentlemen, a huge round of applause, please. Can I have one big round of applause for Kartik Aryan, please? The Shehzada of Bollywood. Thank you so much, Kartik, for making time for us. Thank you so much. Congratulations on the stupendous success of Bhool Bhulaiya 2. Thank you so much. How many of you enjoyed Bhool Bhulaiya 2? Look at that. Quite a few of them, huh? बहुत सारे हैं. I'm glad कि इतने सारे हैं. And I'm really happy with the kind of response finally the films are getting, and finally Bhool Bhulaiya 2 got it for me personally as well. So I'm just thrilled, and I'm just excited with the kind of response and the result, and I'm just looking forward to this conversation now. I know a lot of us have repeat watched it on Netflix. Do you ever repeat Even watch I often? have. Oh, how relatable, Kartik. You know, a lot of actors say, I don't watch my films. What मैं about तो you? बहुत देखता हूँ, मैं तो बार-बार देखता हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि व्यूज बढ़ जाएंगे थोड़े से. खुद भी देख लेना चाहिए कभी-कभी. It's so cute. You play Gru Baba in this, and I've seen kids also do bhajan now in that same tune. Hare Ram, Hare Ram. I mean, that was one thing जो मैंने realize की थी भूल भुलैया 2 के साथ, with the kind of fandom or the kind of fan following it got into the kids. और सबने जिस तरीके से रू बाबा का कॉस्ट्यूम पहन के मेरे सेट्स पे आ रहे थे, जहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ वहाँ पर आ रहे थे, and they were doing अमीजे तुमार कर रहे थे, या फिर you know the song, title track का म्यूजिक पे डांस कर रहे थे. So it's wonderful to see kids doing that. It's wonderful to see the kind of I mean impact
films can have, and I'm so glad that Bhool Bhulaiya 2 did that. And you're right, the kind of impact films can have is that they can seep into our consciousness, they can have an indelible effect on pop culture. And now you are part of our history in all our lives in some way. How does that feel? It feels great. In fact, अभी recently इसका जो success की अगर भूल भुलैया 2 की बात करूं तो उसका सबसे ज़्यादा या kids को लेकर जो हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई थी कि अचानक से कॉल आया था टीम को कि डायमंड कॉमिक्स they wanted to create a comic character out of रू बाबा एंड भूल भुलैया 2 itself की सारे characters को लेकर which is a big thing again. So I mean it's all avenues जहाँ पे ये फिल्म जहाँ पे ये कैरेक्टर्स जिस तरीके से लोगों ने पसंद किया है एंड बार बार व्यूइंग की है मेरे अलावा भी. सो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. He is going to be immortalized in a comic, and I have a question. I'm sorry, I have a question for the audience. Do you know who's the only other actor who was also immortalized in a comic? This was many years ago. Does anyone know who the only other superstar of our times was in a comic? No, it was Amitabh Bachchan. It was called Adventures of Amitabh Bachchan. Adventures of Amitabh Bachchan. Yeah. It was created by Pami Bakshi. That's actually amazing. Yeah. That's quite cool. I mean, he's had an adventurous journey, and which is quite inspiring for all of us. So I think comically, मैं वो comic खरीदना चाहूँगा. That's really, you're in some great company, Kartik. But I have to tell our audience that Kartik has had a very busy year. 2022, of course, is your year. You stole it with Bhool Bhulaiya 2. Next year also you have a very packed year, right? You are going to own next year. My next release would be Shehzada, which is releasing in the Valentine's week, which is February 10th. So I'm looking forward to the release of that film. That is again something. Thank you, which has a lot of comedy. And a great cast. I mean, there is Kriti, there is Paresh Rawal sir, there is a lot of Manisha Koirala ji. बहुत सारे characters हैं जो बहुत ज़्यादा entertain करने वाले हैं. And मुझे वो entertain करने में मज़ा आता है सबको. I think एक film जो wholesome entertain करे सबको और आप सब family के साथ वो देख पाएं. So I think that's the whole purpose of Shehzada also, which is, and I'll be doing action for the first time in that film. So something for me also जो बहुत अलग होगा जिसमें आप मुझे देखेंगे. In fact, I've stolen you from the sets of another film, right? Did I see you from अभी sets? मैं सत्य प्रेम की कथा के सेट से ही सीधा यहाँ पे आ रहा हूँ. I was shooting and again सुबह 6 बजे से हम लोग का shift था, which is going on since a week now. So I'm really again excited for that film. Also, it's going to be something which is a romantic film, and it's going to be the biggest romantic film next year, I guess. Of course, and we also have another huge romantic sequel, trequel, whatever you call it, Ashiki 3 coming out. Yes. And guys, Kartik's going to reveal right here who the leading lady of Ashiki 3 is. मैं तो एक्टर हूँ, मैं वो रिवील नहीं कर सकता. बट अभी डिसाइड अनुराग बासु सर एंड भूषण कुमार सर वही कर रहे हैं. एंड बेस्ट होगा कि उन्हीं को कॉल्स आए और वही डिसाइड करें और वही आपको पता है कि who's going to be the leading lady in Ashiki 3. But doesn't happen like that. I'm sure you are also getting calls asking, I heard it's not finalized yet. I think उनको बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं. मुझे शायद. You want to tell us? You want to tell us? So what's the feelers? I think उनकी नींदें जा चुकी हैं, इतने calls आ रहे हैं, touch wood. So there is a lot of excitement towards the casting of the film. Okay. And I hope we do justice to the film. Okay, before we go into the future with Ashiki 3, let's take it back to Pyar Ka Panchnama. Yeah. How it was a hit. So how important was it for you coming from the outside to deliver with a hit right off the bat? I mean, it was important. मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ. मैं वहाँ से यहाँ पर मुंबई आया था एक्टर बनने. मैं अपने my parents are doctors. They had no clue कि मुझे एक्टर बनना है. मैं उनको नहीं बता सकता था, ना मैं बताना चाहता था, because they would have thought कि इसको क्या हो गया है. They would have never believed or thought it would have been a great idea. तो वैसा कुछ उनके thought नहीं आता.
So I never told them when I was so मैंने studies का बहाना लिया और सारे colleges के exams दिए जो मुंबई में थे ताकि मुंबई के close आ पाऊँ and यहाँ पे auditions दे पाऊँ. So that was the whole idea and DY Patil College में मैंने engineering biotech पे BTech किया. So वो भी मैंने complete किया पूरा. So पढ़ा लिखा actor हूँ मैं. So I think. Any engineers in the house? Give them a shout out, please. अरे Oh, बहुत look सारे at that. Good company. I mean, so मैंने अपनी engineering में second year college में मेरा selection हो गया था प्यार का पंचनामा 1 के लिए और when I was shooting for आकाशवाणी और प्यार का पंचनामा 2 actually, I was giving my final year exams और तो एग्जाम्स के टाइम पे लोग सेल्फीज खींच रहे थे मेरे साथ तो विच वाज अगेन अ डिफरेंट मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम बट आई एंजॉयड. मैं पास हो गया थैंकफुली. पढ़ाई की थी मैंने उस टाइम भी ऐसे ही पास नहीं किया था मुझे बहुत मेहनत लगी थी बट सो आई मीन आई हैड माई ड्रीम्स आई हैड माई शेयर ऑफ ड्रीम्स एंड आई केम टू मुंबई रियली विथ सेल्फ बिलीफ that I still have in me कि वो कभी भी मैं lose नहीं करना चाहता हूँ लाइफ में. So I think कहीं ना कहीं वो struggle चलता रहा and I used to look for auditions through Facebook, through Google searches. मैं उसमें type कर देता था कि actors required या auditions happening in Mumbai ऐसे search keywords ढूंढता था और उसमें से कुछ ना कुछ ऐसे auditions के निकल आते थे तो directly वहाँ पहुँच जाता था. So I used to travel from New Bombay, Navi Mumbai to Mumbai. Navi Mumbai में मैं खारघर में रहता था. So वहाँ से या बैंड्रा, अंधेरी, सेंटा क्रूज जहाँ पे भी ऑडिशन होता था वहाँ आता था और फिर वो ट्रेन से वापस वहाँ अपने हॉस्टल चला जाता था. So that used to happen. वो 2 साल 3 साल वो चला and finally प्यार का पंचनामा का भी ऐसी ऑडिशन मुझे फेसबुक पे ढूंढते ढूंढते मिला और so I didn't have any क्या बोलते थे फोटोग्राफ्स यू नो लाइक कि पोर्टफोलियो नहीं था मेरे पास क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत महंगा होता है और उस टाइम बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसा लगता था पोर्टफोलियो करा लिया मतलब बहुत बड़ी चीज़ कर ली. सो मैं सारी वो वाली फ़ोटोज़ भेजता था जो दोस्तों के साथ ग्रुप में फ़ोटोज़ हैं और उसमें अपने आप को क्रॉप करके किसी का हाथ यहाँ पे लटका हुआ है किसी का सर के बाल दिख रहे हैं तो वैसी फोटोज आई यूज्ड टू सेंड देम फॉर देम टू हैव अ लुक एट मी एंड दे यूज्ड टू कॉल मी फॉर ऑडिशंस नेवरदलेस. सो थैंकफुली आई वाज कॉल्ड फॉर प्यार का पंचनामा's audition and then it happened. That's so relatable and I love that. Can we have a big round of applause for that, for being so candid and being honest? Because let me tell you, I do talk to a lot of actors and they always say, oh, I just accompanied a friend to an audition and, you know, I was discovered. Firstly, do any friends accompany anyone to an audition? कोई नहीं आता. How are these people getting discovered? They go to an audition, they say, I went with a friend and then I got discovered. So, but you went for your audition. मुझे ऐसा friend नहीं मिला कोई जो ले जाता वहाँ पे but thankfully ऐसा मतलब I am proud of my journey. I am happy the way it's shaped up and the way fans have supported me throughout my journey and from my first film itself जिस तरीके से प्यार का पंचनामा का रिस्पॉन्स आया था मुझे याद है कि यंग कपल्स तो थे जिन्होंने फिल्म को बहुत सराहा था बट देयर वाज दिस ड्यूरिंग दिस संडे और मंडे एक्चुअली मंडे को हम लोग एक पीवीआर जुहू में गए थे एक थिएटर में और वहाँ पर एक ओल्ड कपल था जो आई थिंक 70s या उसमें होंगे और वो बोल रहे थे कि उनके हस्बैंड बोल रहे थे कि ये जो भी दिखा है सच है so with his wife causing lot of and she was also really happy about it so they enjoyed they had they still together though I don't know how many of you had a fight after watching Pyar Ka Panchnama look people are raising their hands fight हो गई आपकी देखो उनकी fight हो गई but फिर सुलझ भी गई होगी I mean, it would have been a. After the sequels, I think, yeah, the patch up would have happened. उसमें तो और हुआ होगा, but. आग लगा दी आपने, literally कार्तिक. मैं किरदार निभा रहा था वहाँ पे,
और ऑफ कोर्स वो इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे, वो मज़ा आया था सबको करने में. सो आई एम रियली हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ऑल्सो पंचनामा सीरीज गॉट. एंड देन फाइनली सोनू के टीटू की स्वीटी ऑल्सो अराइव्ड. एंड जिस तरीके से उसमें दोस्ती के ऊपर एक, एंड इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट टू गाय फ्रेंड्स. मुझे इतने सारे ऐसे लड़कियां भी मिली जिनको लगता था कि वो एक दोस्ती में एक सोनू है और एक टीटू है. सो यू नो, तो उनको लगता था कि उनकी लाइफ में कोई एक दूसरा सोनू आ गया है या दूसरी स्वीटी आ गई है. सो या, इट वाज नेवर जेंडर स्पेसिफिक, सो which was a great thing about it. Yeah, it was quite relatable. And Kartik, you've always been loved by your audiences, but was your journey always that easy? No, it's not been easy. It's been quite a difficult journey, and it's taken some time. Also, thankfully, I started when I was 20, so I was almost मतलब child artist की तरह ही start किया था पहली फिल्म में. तो वो चीज़ मेरे लिए एक फ़ायदे की हो गई. But it's been a journey with ups and downs, and I've seen hits and flops, and finally. A situation for the longest time a lot of people didn't know my name. वो काफ़ी हद तक, जब तक पंचनामा हो रहा था, पंचनामा 2 हो रहा था, उसके पहले भी बीच में आकाशवाणी फिल्में की मैंने जो नहीं चली या चली. सोनू के टीटू की स्वीटी वो फिल्म थी जिसने मुझे घरों तक पहुंचाया. एंड आई वाज इन द इंडस्ट्री फॉर लाइक 7 years देन. और तब तक किसी को पता नहीं था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ या मैं वो मोनोलॉग वाला लड़का हूँ जो लंबा डायलॉग बोलता है. सो या एक सबको ये लगता है मैं वो एक सांस में बोलता हूँ, विच इज नॉट द ट्रूथ. इट्स नॉट पॉसिबल. It was not a single take. नो सिंगल टेक है, बट एक सांस नहीं है. Okay. सांस लियो. So but it's been a journey which when I look back also, I feel that I would never change anything about it. And I have been lucky, unlucky, ups, downs, सब देखा है, but it's quite cool. I mean, I'm enjoying the success of Bhool Bhulaiya 2 or Dhamaka right now, and I'm really in a good space, thankfully. And I hope all my next movies also. Don't wrap up here. नहीं, मैं wrap up. So from an actor to a star to a superstar, what are the perks of being a superstar? Actually, मैं अभी recently लाल बागची राजा उनके दर्शन करने गया था, तो वो मुझे थोड़ा बहुत अच्छे से दर्शन मिल गए थे. तो मैं अपनी मम्मी के साथ गया था. So she was really happy, and finally she said कि तूने actually कुछ achieve किया है. How cute. We saw those selfies there. Even there, fans came and met you, and even there, very sweetly in that crowd, you obliged for the selfies. Yeah, वो मुझे अच्छा लगता है photos खिंचाना. So I'm happy with it. I feel कि सबके पास photos हों and सब खुश रहे मेरे से, and they try and watch all my movies and give me the same amount of love they've been giving me. So yeah, so that was the thing. But people don't just come and ask him for selfies. These girls are crying. There are girls just stalking him outside his house, his gym. कई बार जब वो रोती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ना सोचे मैं रुला रहा हूँ. So वो कई बार ऐसा हो जाता है. and वो थोड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है, क्योंकि एक आध सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि कोई रो रहा था, मुझे देख के रोने लगा, तो मैं चुप कराने लगा तो वो और रोने लगी. तो अभी मुझे समझ नहीं आता है कि चुप कराऊं या नहीं कराऊं, या दूर रहूं या पास खड़ा हूं. तो वो बहुत सिचुएशन होती है, which is an awkward situation to be in, but I get the point कि कई बार they get overwhelmed basically. So and I have been in that situation जहाँ पे मैं फैन रहा हूँ, मैं बाहर सेल्फीज लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ, और and I got happy जब मेरे को ऑटोग्राफ मिल गया. So I think I get it कि कैसा फील होता है. So I relate to it somehow. Yeah, but now, you are a star. You're not taking selfies anymore. In fact, people are calling and asking you, as a hit kaise dete hain when a year, when so many big films have flopped, have people been calling you, Kartik, give some tips? Tips to nahi pata, but they're happy that suddenly this film at least opened doors in 2022, and it became a big success or a blockbuster.
एंड आई थिंक इट ऑटोमेटिकली वो एक वेव टर्न हो गया फिल्म इंडस्ट्री का, बिकॉज जिस तरीके के पैच से हम गुजर रहे थे, I think it really badly needed that kind of a success, which Bhool Bhulaiya did. And first time इतने टाइम बाद हाउसफुल बोर्ड्स लग रहे थे वापस से. एंड मैं इनफैक्ट गेटी में गया था जब वो वहाँ पे 900 से 1000 लोग, मतलब वो उतनी भीड़ वहाँ पे आई हुई थी शोज देखने के लिए. सो आई वाज रियली हैप्पी विथ the kind of response that it got, and the industry was really happy that it opened doors for the next films to actually ponder over it. But some big films didn't work, you know, this year. And everyone's saying, you know, are Southern films better? Is Bollywood over? What do you feel? Is there a need for the industry to reinvent itself? आई थिंक अच्छी फिल्में चल रही हैं. ऐसा नहीं है कि आपको लगा हो कि यार ये फिल्म बहुत अच्छी थी और ये चल सकती थी लेकिन नहीं चली. ऑडियंस स्मार्ट हो गई है एंड दे want to get entertained, not just comically but just get entertained. If they are paying for it and they are going to a theater to enjoy 3 hours or 2 hours of their time with their loved ones, I mean हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उतना अच्छा फिल्म उनको दें, उतना अच्छा कंटेंट उन्हें दें. सो जो अच्छा कंटेंट दे रहा है वो फिल्में चल रही हैं. एंड आई मीन देयर आर एग्जांपल्स जिस तरीके की फिल्में चली हैं इस साल, और जिस तरीके की फिल्में नहीं चली हैं तो आपको ऑटोमेटिकली रीजंस भी दिख जाएंगे. Now, audience members, I want you to keep your questions ready for Kartik, because I feel like I'm monopolizing his time. In 10 minutes, I will come to you, and I will use this time to segue and tell you that Kartik is one of our only single superstars. I think the only single superstar. Correct बोला मैंने? अकेला सुपरस्टार बोल रहे हो आप या? नहीं. The one who is not romantically in a relationship officially. They know something. What, who? Unofficially also. They're saying Salman Khan and you. Okay. Salman Khan is there, that's true. And then Kartik, you're also officially, unofficially single. I am single and I don't know उसको आगे मैं क्या बोलूँ इस चीज़ में. मतलब अभी it's a cliche thing to say, अभी मैं काम में busy हूँ, मैं अपना काम में अपने work को, my work is my relationship. But I think I'm just happily single right now. And when the right person comes in my life, I think I'll you'll hear that I'm not single. Okay, so you'll tell us when you're dating somebody, you will tell all of us. हाँ मैं छतों पे चढ़ के चल रहा हूँ. That's what they all say. हाँ शादी पे नहीं invite करोगे. मैं इनवाइट करूँगा शादी पे, आप सबको इनवाइट करूँगा. They're all listening. They're going to hold you to it. So सब लिफाफे में थोड़े से पैसे लेकर आना. हाँ कर देंगे. So when the girls are sliding into your DMs, do you read them or does your team read them? Social media. I mean, no, I read them sometimes, okay. but I have to know them, because what happens is वो इतने DMs आते हैं कि वो एक there is a वो सेक्शन अलग बन जाता है जिसमें आप जब नहीं जानते हो तो उनके मैसेजेस कई बार आपको नहीं आते. और कई बार एक्चुअली ये अच्छी चीज़ है जो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई भी करना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जिनको शायद से मैं एक्विंटेंस में ऐसे मिला हूँ या इंडस्ट्री में भी मिला हूँ, या और उनको मैं अगर फॉलो नहीं करता हूँ तो वो मैसेजेस DM में कभी दिखते नहीं है. एंड इट गोज ऑफ एंड देन इट ऑटोमेटिकली सबको लगता है कि अरे यार ही इज अनअवेलेबल या फिर अनरीचेबल सॉर्ट ऑफ. सो वो एक चीज़ है, लड़के या लड़की दोनों. हाँ, सो इट्स फॉर दैट. बट या आई रीड देम, जो जिनको मैं जानता हूँ उनके DMs, एंड रेस्ट ऑल मैं इतना ट्राई नहीं कर पाता हूँ DMs रीड करने का. Okay. So basically you're saying they can DM you and you're reading the DMs. They can DM me. Okay. They can WhatsApp me also. WhatsApp you also. Okay. ठीक है. क्या? Number. यहाँ छपा नहीं था यहाँ पे. दे देंगे. Audience question time. Yeah. We can ask him. Done. So, but Kartik, you say you don't have time to meet people. You meet a lot of people on the sets of your films. इतने 6-7 फिल्म कर रहे हैं आप. मैंने कब कहा मेरे पास टाइम नहीं है. टाइम है. ओके. मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ दिन भर में, और
and I'm glad कि मेरा एक profession ऐसा है जिसमें you get to meet a lot of people and you get to travel a lot as well, which I really love. So I think yeah, that's about it. But मतलब single होना उससे But is it difficult to date somebody from the industry? I mean, it's not about dating someone from the industry or outside the industry. I think you have to be lucky enough to get that true love in life. So I think whenever that time comes, वो अपने आप आपको पता लग जाता है. Maybe मतलब पता नहीं, मैं इतना lucky रहा नहीं हूँ शायद अभी तक. Oh. Are you saying you've never been in love? No, I'm not saying that. Okay, okay. You're not saying मैंने luck की बात की. lucky part. Okay, okay. So people make your own deductions. So been in love but not unlucky in Though love. I am a romantic hero. Not just a romantic hero, na. Now you're a serious action hero also. अभी वो तो time will tell. एक बार ये film जब release हो जाए next year, I hope I become that as well. And I've given all my efforts and I've given a lot of time to it also. And Rohit, who's directed the film, has really done a lot of hard work and he's created a world which I'm really proud of. So I hope it entertains a lot of people. So your next film, when can we expect it? When is the next film going to be coming out? February 10th. Oh yeah, this is the आप Valentine's Day में जा सकती हैं अगर आप relationship में भी हैं. नहीं तो आप अपने friends के साथ जा सकती हैं. नहीं तो आप single हैं तो आप single अकेले भी आ सकते हैं. Now the tables have turned. Yeah, exactly. Kartik asked me to give you 10 minutes. I'm going to do the same to you. You know, we have so many people who are great with investments here and finance here, so many CFOs, CEOs. What about you, Kartik? You take care of your investment ki itna invested nahi hai for now, letting others So manage. my mom takes care of it. मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि मेरे अकाउंट में 10 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं या कितने रुपए हैं. My mom is the one who actually does everything regarding this thing, and well, she's not into accounting and all. She's a doctor actually, but she's the one who's actually helping me out with it, and she takes a lot of interest in it. So I have left it to my mom, and yeah, so she does. I try to ask you about finance, but does your family also want to find you a nice, sweet girl, considering you're so parivarik? मुझे लगा आप बोल रहे हो property कोई कुछ Property नहीं, property ऐसे में no, invest करना है ऐसा नहीं है. मुझे बता दीजिए अगर है कुछ. लड़की property नहीं है, no. नहीं अरे हाँ. No, but do they want to find you a nice, sweet girl, considering you have this very parivarik, you know, image? My mom, dad? Yeah. They want me to? Yeah. They are actually happy right now that I'm really working hard, and they're happy with the kind of interest I'm taking in my work right now. So I think they want me to be the way I am right now. I hope. We love you the way you are as well. Yeah, thank you. So तो कोई ऐसा pressure नहीं है, कोई ऐसा सोच नहीं है उनकी अभी. Yeah. You know, there is a rumor that I'm going to ask Kartik about, and I'm sorry, I've not done this. Rumor? Is it true that you never have a bad hair day? What? You never have a bad hair day, is it true? No. I never have that. You never have no. it. अगर मेसी भी होते हैं तो भी वो एक हेयर स्टाइल बन जाता है, और अगर ऐसे बना के निकलता हूँ तो ये भी सही चलता है, I think. So सही चल रहा है, for sure. Okay, now opening it up to the audience. So many questions, there's so many hands up. Go ahead. अरे sir, yes. Hi, Kartik. Hi. My name is Monica Rajendra Agrawal, Hi, Monica. and I'm a big fan of yours. Thank you. My question is, what's your favorite movie? My favorite movie as such, मतलब movie या मेरी खुद की movie में से कोई हो. Yours or anybody मुझे else's? बाजीगर बहुत पसंद है, डर बाजीगर, और मेरी फिल्मों में से मुझे एक्चुअली भूल भुलैया 2 और सोनू के टिटू की स्वीटी बहुत पसंद है. Mine too, Sonu ki. Thank you. Okay, but sorry. One second, I'm also part of the audience. One question, last one. Kartik, any hidden talent we don't know of yours? Any singing? आपने 2 बार सिंगिंग ही बोला, लेकिन वो नहीं ऐसा कोई हिट. मैंने सारे टैलेंट बेच दिए अपने. मैं सारे स्किल सेट दिखा देता हूँ जब आते हैं. मैं कुछ छुपाते नहीं हो. You even taught Deepika Padukone the steps. So
we would love to learn the step from you guys. Won't we love to see him do यहाँ पर the iconic one, the Dheeme Dheeme one? That slide, I've been trying it at home. I don't know how many of you have, but okay. so if I can have music the track, music please. है यहाँ पर? Music. आप है सब है. Thank you for being so sporting. Now back to the audience. I want to chew down for that dance. Go ahead. अरे सर बहुत मेहनत करा रहे हो. यहाँ पे कुछ टाइमर चल रहा है वो. अच्छा ठीक है. प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है और क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. एंड बुलशिट शी इज वरीड यार. उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स. सीरियसली यार आजकल तो जब वो मुंह खोलती मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं. ट्रस्ट मी 6 महीने में आई हैड इट ऑल. सब देख लिया मैंने. अरे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काहे की खुशियां. रिलेशनशिप का मतलब होता है एन टू योर ओन हैप्पीनेस. उसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे जो कभी तुम्हारा भी बर्थडे था. मैं बता रहा हूँ इन लड़कियों को कोई खुश नहीं रख सकता. थैंक यू. From engineering, now you used to memorize all this in school. You must have हाँ आई थिंक या बट वो हेल्प तो थोड़ा बहुत मैं कर लिया. सब इंजीनियरिंग का भी ले लिया. और जी सॉरी. My name is Ruchi and I really love all your movies, especially Pati Patni or Wo. It was so entertaining. It was really. Thank you. I have a small question which everybody here is asking continuously. जी. Who is the one actress that you have a crush upon? फिर उसकी हेडलाइंस बन जाती है. जैसे फिलहाल नहीं है. मैं ऐसे बोल सकता हूँ. फंस जाऊंगा रुचि जी. बुरी तरह फंस जाऊंगा. Because she was trying. इनका नाम नहीं लिया तो वो बुरा मान जाएंगी, उनका नहीं लिया तो ये मान जाएंगी. She was trying to get the name of Ashiki heroine. That also you didn't reveal. So something should come. जो भी आशिकी की हीरोइन होंगी वो तो रेनकोट के अंदर हिडन ने. वो हिडन रहेगा अभी तो थोड़ा तो इंतजार. Thank you so much. Thank you. Question by Hi, I'm Firoza. Hello, ma'am. I'm the bicycle mayor of Mumbai. And मेरा क्वेश्चन ये है, आप ग्वालियर से हो और आपका मुंबई का फेवरेट, मतलब हमारे इधर तो फूड और आपका फेवरेट गेट अवे, और आप साइकिलिंग खूब करते हैं मुंबई में. क्या साइकिलिंग? यस. आपका खाना, फूड, मुंबई की फूड जो आपको अच्छी लगती है, और आपका फेवरेट गेट अवे मुंबई से आप किधर घूमने जाते हो. और मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है. तो मतलब मुझे ऐसी चीज़ें काफ़ी पता नहीं वो बचपन से आदत लगी है. तो ऐसे जैसे मैं नाम ले सकता हूँ जगहों के क्या, कैसे हाँ. देयर इज दिस प्लेस जुहू में एक जगह अमर जूस सेंटर, या फिर या मैं बहुत चाइनीज़ खाता रहता हूँ एक जगह पे जो मेरे घर के ही आसपास है. सो आप आई मीन मुझे स्ट्रीट फूड कहीं पे भी मिल जाए वो मुझे बहुत पसंद है. तो आई थिंक मेरे फ्रेंड्स भी वो पसंद करते हैं. सो वैसा ही चीज़ है. गेट अवेज में मुझे एक्चुअली हिल स्टेशंस जाना पसंद है. और जैसे मनाली और शिमला और ये सब जगह, तो वहाँ पे वो काफ़ी दूर भी पड़ जाता है कई बार, बट वो मुझे पसंद है वैसी जगह. साइकिल करता हूँ कि नहीं? साइकिलिंग मैं भागना पसंद करता हूँ एक्चुअली. किसी से भागना नहीं, भागना. मुझे सो वो आई लव रनिंग बेसिकली. So it's like a workout for me, and so that is something I really like. I love dancing. So if that is something which can be considered as a hobby also. So dancing and running. अरे सब टफ ही आ रहे हैं मैम. ये तो डरा दिया आपने. Hello Kartik sir, my name is Kainas. हाँ, just yes. मैम इनके मम्मी पापा डॉक्टर्स हैं, उनको पता होंगे फार्मास्यूटिकल्स के बारे में.
So let's move on. I don't think so Let's ऐसा है. move I on. don't think so ऐसा है. Let's move on. Hello, Kartik sir. My name is Kainas, and my question to you is: if you were an actor, what would you be? I think a director, maybe. So, लेकिन something to do with this field itself. I enjoy being a part of this creative world. So I would love to create a world of my own. That would have been something. अगर मैं actor नहीं होता तो मैं ये कर रहा होता. Thank you, sir. सर शाहरुख सर मुझे बहुत पसंद है. हाँ, अभी मुझे काफ़ी स्पेंड करना पड़ेगा कोई एक फिल्म के लिए जो मैं कर रहा हूँ, बट मैं जनरली उतना टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ उसमें. मैं जैसे मैंने अभी बोला कि मुझे जेन्युइनली डांसिंग वगैरह ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और फिल्में देखने में बहुत मज़ा आता है. सो आई थिंक वो सब में मेरा ध्यान ज़्यादा जाता है. इट्स ऑल्सो लाइक समथिंग लाइक एकेडमिक्स ही हो जाती है एक तरीके से. और मैं हर तरीके की फिल्में देखता हूँ, अच्छी बुरी, चली नहीं चली, सो वो सब देखता हूँ. सो उतना बट आई टेक केयर कि अगर मैं डांस नहीं कर रहा हूँ तो मैं जिम कर रहा हूँ. सो इट्स लाइक 45 मिनट्स अ डे कुछ ना कुछ ऐसा वर्कआउट ज़रूर होता है. All right, one last question. We're wrapping, and this time someone with the mic so we can get the audio. Go So ahead. my name is Hina Bhatia. I'm your big fan along with my Thank you, 9-year-old ma'am. son. I have a question. What is the last text that you sent from your phone? What's the last text? ये तो मैं झूठ बोल सकता हूँ. You got to be honest. हाँ? You got to be honest. मैंने एक्चुअली अभी अपनी मम्मी को बोला था कि वो CNN ऑन कर देना, उसमें आने वाला हूँ. वही मैसेज है. How cute. And on that cute note, I think it's a perfect note to wrap up. And he's been absolutely fantastic today. Can I have a big Thank round you. of Thank you applause so for much. Kartik? Thank you. It's been an absolute pleasure having you. Kartik. For that wonderful session. Please stay with us on the stage. I would also like to invite our group CTO Rajat Nikam on the stage to present a memento and felicitate Kartik Aryan. A huge round of applause, please. ऐसा है कि जब एस्पिरेशंस ये क्षमता के बाहर निकल जाते हैं. देखिए, हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है, लेकिन अपनी क्षमता से ज़्यादा कई बार उसके एस्पिरेशंस हो जाते हैं. तो ऐसे समय आदमी फैसले करता है. तो हम तो अलायंस में लड़े, और जिस समय अलायंस में लड़े, हर सभा में, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, हमारे अध्यक्ष जी हो, सबने ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ रहे, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा. तब स्टेज पर उद्धव जी थे, वो भी ताली बजाते थे. उन्होंने भी कई बार कहा मेरे नेतृत्व में चल रहा है. अब बाद में रिजल्ट आने के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो इसलिए मैंने कहा कि क्षमता से बड़ा एस्पिरेशन हो गया, क्योंकि उनके तो चुनकर आए थे 56, हमारे चुनकर आए थे 105. हम जितनी सीटें लड़े उसमें हमारे 70% चुनकर आए, वो जितनी सीटें लड़े उसमें 42% चुनकर आए. तो इसका सीधा मतलब ये था कि हमारे कारण उनको मैंडेट मिला था, मोदी जी के चेहरे के कारण उनको मैंडेट मिला था. लेकिन उस मैंडेट को नकार कर मुख्यमंत्री बनने की एस्पिरेशन के कारण उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना ठीक माना, तो युति टूट गई. देवेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, 5 ट्रिलियन का ख्वाब है, दैट ज़ाका ऑल्सो मेंशन.
एक स्टेट ने तो कह दिया 1 ट्रिलियन, महाराष्ट्र कितना कर सकता है? 1 ट्रिलियन कहने वाला पहला स्टेट महाराष्ट्र था और 1 ट्रिलियन पहुंचने वाला भी पहला स्टेट महाराष्ट्र होगा। अब इसी से जुड़ा दूसरा सवाल, 5 साल के आपके कार्यकाल में आपने बहुत कुछ किया, वाटर कंजर्वेशन को लेकर किया, क्राइसिस मैनेजमेंट किया, डेवलपमेंट के लिए किया, मेट्रो का काम, कोस्टल रोड मुंबई में काम। उसके बाद जो हुआ तो उसमें महाराष्ट्र आगे बढ़ा है कि पीछे आ गया है? आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है पिछले 2.5 साल का? नहीं, देखिए ऐसा है कि पिछले 2.5 साल के बारे में आपने पूछा, तो मैं इतना ही कहूँगा कि 2.5 साल में क्या हुआ, ऐसा अगर किसी भी आम नागरिक को हम पूछे तो उसको पता ही नहीं है क्या हुआ। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हमने महाराष्ट्र में शुरू किए थे उनमें से कुछ को बंद कर दिया गया, बाकी कुछ चल रहे हैं। एक भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ महाराष्ट्र में। हाँ, एक बात ज़रूर हुई और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि महाराष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत सटीक माना जाता था और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जो पुलिस है और मुंबई की पुलिस है, इसका देश और दुनिया में बोलबाला था। किंतु जिस प्रकार से घटनाएं महाराष्ट्र की पुलिस में घटी और होम मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा और जिस प्रकार से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का स्कैम हुआ, इससे निश्चित महाराष्ट्र के पुलिस की प्रतिमा पर एक दाग लगा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, दाग लगाने को तो 1 साल लगता है पर दाग मिटाने को कई साल लगते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग पीछे गए, न कोई नया निवेश आया, न कोई गति बढ़ी। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा कहूँगा कि पिछले 2.5 साल में जो सरकार थी वो सरकार अपनी कोई अचीवमेंट बता नहीं सकती है। बोलने को तो 4 चीज़ें वो बोलेंगे, पर एक भी ऐसी चीज़ जो महाराष्ट्र को आगे ले जा पाए ऐसी उस सरकार में नहीं हुई। केवल भ्रष्टाचार और महिमा। He came out of the shadows of being Babasaheb Thackeray's grandson to carving a place for himself in Maharashtra's complex politics. As a key face of the erstwhile Maharashtra Vikas Aghadi government, Aditya Thackeray was instrumental in Shiv Sena shedding its Marathi Manus image and taking on a more modern stance. The former environment minister and crusader was at the forefront of the protests against the RE metro car shed, standing firmly with the people. Under Aditya Thackeray's leadership, Mumbai became the only city in South Asia to have a climate change mitigation plan. From making public transport seamless to bringing IB curriculum for BMC schools, he worked tirelessly to transform India's financial capital and make it more inclusive. But at the same time, Aditya Thackeray didn't lose sight of Shiv Sena's core values. His first solo visit to Ayodhya saw him taking forward his father's vision and countering criticism from the BJP about being soft on Hindutva. The conscientious and well-read Aditya Thackeray is the perfect blend of modern and traditional, and always willing to fight the good fight. I now invite Mr. Aditya Thackeray to stage. Our managing editor Zaka Jacob and our Mumbai bureau chief Vinaya Deshpande shall moderate this session. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for Aditya Thackeray. Thank you very much, Aditya, for joining us here on the CNN News 18 Town Hall. As we went down to greet him, the first thing he said to me was, "Welcome to Worli." And I said, "Yes, thank you very much," because he is the local MLA here and we are in his constituency. So can we have a round of applause for that?
Thank you, and I hope I didn't sound like Jaikant Shikre saying welcome to Goa. No, you certainly didn't. Let's start off with the city of Mumbai. You're, of course, a Mumbaiker. You're so passionate about the city, the direction of the city, and what it envisages to be. We've heard Mumbai will become like Shanghai, will become like Singapore, will become like Tokyo for a number of years now. The point is, we haven't got there. Many people have outlined visions as to how to get there, but we're still a distance away, maybe many years away, maybe decades away. What is your vision of where Mumbai should be 10 years from now, and what is it that you were not able to do in the 2.5 years that you were in power to achieve that vision? No, I think primarily we shouldn't start off aiming ourselves to be like someone else because, when you try to emulate someone else, having a role model is good. But trying to look like someone, trying to behave like someone, and I'm not saying this in a political sense because I'll be misconstrued again, it's a form of mimicry then. There will be, obviously hurdles in every city, and every city that has grown. If you see, cities have always been the growth center for the human race. In today's world, when we speak about ease of doing business, ease of compliance, yes, we've done a lot as a country. We've moved ahead in terms of ease of doing business. But what is very, very crucial for us as Indian cities is to promote ease of living. We need to define what urbanism is. We need to define what urbanization is because, there was a time in our recent past where urbanization was seen as a negative thing, where migration from the rural areas to the urban centers was seen as a negative thing. But today, the fact remains that we have a huge migration of a working population, be it a floating population or, a permanent residency population, that is moving towards urban centers. We need to look at a couple of things when we speak about cities, especially cities like Mumbai, Chennai, Bangalore, Surat, Delhi, Kolkata, where we're looking at housing. That is the first and foremost thing because even today we've got slums, we've got people without a roof on their heads, we've got, people struggling for homes. And we saw this as the biggest crack in our governance systems across the country when we were facing COVID lockdown. So I think that is the first. Two, for any country, for any state, any city to move ahead, we need quality education. We have right to education, but we need quality education. We need equality in education and equality in quality of education. So be it the availability of your state board, SSC, then CBSE, ICSE, IB, IGCSE. We need options for either affordable or free education. Then, of course, going beyond that, you need healthcare. And apart from that, you need the other basics, which are parks and gardens, footpaths for pedestrians to walk around, and good roads and public transport systems. So I think these are some of the things, and this is what we were focusing on when we speak about Mumbai. But, while you say all these things, and I know for the last few years you've taken steps for this as well, but you've been at the helm at BMC for decades now, and still, when one talks of Mumbai, one unfortunately looks at, pothole-ridden roads, deaths due to potholes, and a flooded city which just cannot handle monsoons year after year. For decades, why hasn't that picture changed for Mumbai? So what we couldn't change in decades, we changed in 2.5 years in terms of a little jump ahead. Couple of things. First, something that I'm very proud of for the BMC and all our other agencies who work together, the Hind Mata region. You've worked in Mumbai for a long time. I've seen Mumbai for a long time. Every time we have heavy monsoons, the first place where the media parks up and politicians park up to show fingers and point fingers at each other is Hind Mata. This was the first time where we had heavy monsoons and the Gandhi Market area and Hind Mata did not flood. That was primarily, again, because of the monsoon tanks, the rainwater harvesting and percolation pits that we created. Are you sad that the credit for it was taken by someone else? No, I don't fight for credit. I'm happy when I went to Gandhi Market. When I went to Gandhi Market, all of the shopkeepers hugged me, thanked me for it, showed me their love, took me inside the Gandhi Market, so they were very happy about it. The flooding tanks that we've created, and we're working on one near Milan Subway, the other one's coming up near Andheri, so Milan Subway by next year would be flood-free. You need to work on that. The other one, of course, is, yes, there are things like roads, there are issues to do with every civic aspect and across all our cities. The problem therein lies where you have 16 or 17 different agencies that are running the city. For example, in Mumbai, for every single week that we had, we were in government,
I had a meeting personally as the Guardian Minister of Mumbai with MMRDA, SRA, MHADA, the Mumbai Police, Traffic Police, BMC, Forest Department, 16 different agencies for every little bit, be it footpaths that I was focusing on, or safe schools, or better schools, or parks, or gardens, or something like the coastal road. Now the coastal road, or the MTHL, or the Worli-Shivdi connector, or the Dahisar-Mira Bhayandar link road, all of them have at least 3 or 4 agencies linked to its work. And the work that would have taken about 6 to 8 months, because of our weekly meetings, was getting done every single week. I think the secret herein lies either make a single authority for a city like Mumbai, or sit with everyone together and just ensure that everyone works together. Once they sit together, everyone works. No, one issue, before we get to the next question, I think the fact that Hind Mata did not flood this time is like an 8th wonder of the world. So I think we should have a round of applause for that. But one issue that is very close to your heart, and you fought very hard for this, is the RA forest area. Tell me what went through your mind when the current government changed that decision? And today, just an hour ago, we had the Deputy Chief Minister and we asked him a question about this. And he said, you know, the previous government went after RA, but the High Court had approved it, the Green Tribunal had approved it, and he claimed that there was a committee that your government had appointed which also upheld the fact that the car shed should be built in RA. He's looking into the first committee, not the second committee. And it depends on, it frankly depends when you move a matter to court or when you move a matter to NGT and other places. It also depends on what the government sees and presents its reports and EIAs as. The issue with RA was simple. You know, even today there are some misnomers being spread, some rumors being spread that the whole line was stopped. No, we did not stop the work for the 33 kilometers of, you know, the Seeps-Kolaba line. We only stopped the work at RA. 2, of course, there are some faults with that line that have still not been answered, and they will not be answered because the speed at it's going. First, the 10,000 crore escalation. It was done before December 2019. According to which norm? Nobody knows. CVC rules, broken. That is a different thing altogether. Let me not get into that. 2, there's a thing called the stabilizing line. When you have an issue with one of the trains that is running on the 33 kilometers, you need to have a stabilizing line where you can pull out the metro bogie, bring in another one, insert it and repair this one. There is not a single one on the 33 kilometers. 3, the issue with RA car shed is not about a particular land. It's not about only the trees, because a lot of times I've heard this thing about, oh, only 2,700 trees, you have got 30,000 trees here, you know, this highway is going to take 1 lakh trees. It's not about trees. Yes, saving trees is important, and we try to do that as much as possible. But this is about a forest, a living and breathing forest in the city of Mumbai. Just 6 months ago, we had a camera trap set up there with the government of Maharashtra Forest Department and a couple of local NGOs and reporters. We've spotted 5 leopards in that car shed area, which means that this is a living and breathing forest. If you have a living and breathing forest, the thing was simple. Let's shift this out to somewhere else, because this car shed, this metro depot, can only serve us till about 2034 or maybe 2040 till the max. We were trying to link it up with Kanjur Marg. Today, as Metro Line 6 is coming up, Metro Line 6 does not have a car depot, and it had started work in 2018. Why was it so? So when we took it to Kanjur Marg, it was simple. There were lines 3, 6, 4 and 14 connecting the entire MMR region, a population of almost 2.5 crores to 3 crores, through one nodal point, saving us almost 10,000 crores, because instead of acquiring 4 different lands, building 4 different car sheds, you could have had it in one place. And that could have saved us money, time, energy, everything. And that is the whole idea. So this is not about an ego issue. This is not about, you know, your ideology, my ideology. This is about a practical issue. We're saving a forest. It's going to harm everyone else. It's going to harm us who live in Mumbai. But soon after that decision was taken, like I remember that was one of the first decisions that was taken as soon as this government came to power. Your father gave a statement saying that, you know, don't take revenge on Mumbaikars if you're upset with us. Do you still feel that bitterness? It is. I mean, he asked me that about what my first thought was. And we felt sad because, see, I mean, they could have taken any decision in terms of the first cabinet decision. Our first cabinet decision was giving 600 crores to the fort of Raigad, which is Chhatrapati Shivaji Maharaj's fort, for its restoration. That was our first decision. This dispensation, I don't call it a government because I don't feel it is constitutional. This arrangement, whatever it has, you know, tried to seek revenge or avenge whatever we did in terms of the first strike on Mumbai. And today, if you see, Mumbai has no voice in the cabinet. There is no Mumbaikar in this cabinet.
Well, there's Mangal Prabhat Lodha. No, you need someone who understands the reality of Mumbai, not the reality of Mumbai. And, that's where the nuance is. So since we're talking about politics around Mumbai and everybody is gearing up for the BMC elections, looks unlikely that it's going to happen this year. Maybe it'll happen only next year. The question is, are you in a position to defend this fortress of yours? You've been in power here for the BMC last, God knows, 20, 30 years. The BJP has put out a target of 150 plus. Will you be able to defend this fortress after what we've seen over the last 3 months? Look, it's going to be a mighty attack on us. It's going to be a mighty attack on Mumbai, and we all know that, and we're prepared for that. The fact of the matter is, we have shown a love for the city as Mumbaikars, as someone who stay here, as someone who love the city. This is our Janma Bhumi, our Karma Bhumi. This is going to be our Bhumi forever. In the past 2 years and in the past 25 years that we ruled BMC, or rather served through BMC, not ruled BMC, and served through the government of Maharashtra, the chief minister was from Mumbai. Major projects took off. Things like the BST bus, electric clean transport, trying to hit 10,000. Everything we did largely was also a lot of Mumbai that was never voiced before and has never been voiced as of today. So obviously the Mumbaikars know what we have done for the city, be it in COVID times, being honest with the numbers, transparent with the numbers, our first jumbo COVID care centers, right from that to the sustainable development that we are focused on. And I think people would prefer Mumbaikars to be running Mumbai than Mumbai taking its diktat from somewhere else. There's one follow-up question to that, Aditya, and that is that critics say that there was an opportunity that the Shiv Sena had in February to hold the BMC polls. You had just overcome the COVID wave. You were being appreciated for the way you handled the wave. There were a lot of weekly meetings going on, a lot of projects going on. There is a sense that if you could have rode on that, maybe things would have been different. Is there a regret that? No, exactly right. I mean, the only regret probably is that we don't think too politically. Maybe we could have taken elections last year, gone for elections before the term ended, because the people knew what the COVID handling was. But we don't see these things as typically through a political perspective. We see this for the city. When we were just coming out of COVID, the city was actually bruised. It was, we had memories of COVID across the world. And we thought that we need to give a little breathing space for our authorities to plan the elections better. It has to be a free and fair election. It has to be well managed. We can't, keep hitting our authorities and officers with things after things, and our people things after things. So I think the whole idea was that have it in a good time where people can step out, be safe, and not have the fear of catching COVID. But then, when you talk BMC, you've seen people like Yashwant Jadhav, you've seen people like Yamini Jadhav. We saw the kind of public statements she made after she left. People who were considered to be extremely close to Matoshri behaving like that. Do you think, A, that it is betrayal, and B, that it is going to affect your fortunes in the BMC elections? I think people are seeing through it. It's a world that we live in that is open, transparent, 24/7. People know what is happening. People are also aware of what has happened and transpired behind the scenes. I mean, whatever reasons they give, the real reason is out there in the people. I mean, and I ask the people, everyone's speaking about a couple of things that are very prominently out there. But I think the whole idea really is people know what has happened. People will stand by us, and that is what my feeling is whenever the elections happen. And that is why this arrangement of governance is not willing to take elections. I have been appealing to them, saying the 40 of you who don't, want to stay with us, and I don't know what other word than Gaddar can be used for that, resign, face elections again. Whatever the people decide, we're okay to accept that. Because in the history of India, in the political history of India, such a jump without facing elections or without having the guts to face elections has never happened before. And I am saying, I will resign with you and I will face elections too with you. Come on, let's resign and face elections. The other thing is, let's face elections for BMC right now. Not a problem. So now that it's been a couple of months and the dust has kind of settled on it, what is your best assessment as you look at it in hindsight? What exactly went wrong? Because the criticism from that side is the Thackerays were inaccessible. The criticism from the other side is, the succession plan was very clear now that Aditya has been moved up as a cabinet minister. So what is there for other leaders? So what is your best assessment of what went wrong? Were you inaccessible? Were you blindsided? What was it? I think there were multiple factors that put the pressure on them to jump ship. Apart from that, of course, in terms of inaccessible, I think I was roaming around, I was everywhere. They've shifted goalposts left, right, center. First, they blamed our allies for spoiling their political fortunes. Then they've blamed them for not giving them political funds for the constituencies or for the departments, which was read out.
Then they spoke about Hindutva, their narrative, which we, obviously read our whatever we've done, and that was spoiled. Then, I don't know, I mean, succession plans, I had ministries that were not asked by anybody. Typically, till I took up the environment ministry, till I took up the protocol ministry, or till I took up the tourism ministry. These were ministries given to people who you want to make ministers, but not very prominent ones. I mean, you didn't have the UD with me, you didn't have the industry with me, you didn't have any important portfolio. And these were portfolios, especially something like the UD, which no chief minister in the past 40 years has ever parted with. What more do you give to the people? What more do you give to these 40 people? I was joking about this somewhere, that tomorrow they might be blaming me for wearing a blue shirt every single day, and that's why they hopped ship. So the whole idea is, if someone has ambitions that are monstrous, if someone has pressures on them that cannot be spoken in public, they will hop over. And I don't have a problem with that. I've said them, good luck to you, be happy where you are. That's not the problem. My problems are two. One is, why did you backstab us when we gave you everything, right from our trust, love, everything? And two, if you wanted to hop over, why haven't you yet resigned, as it happens in a regular democracy, and contested elections and then gone over to the other side? That's as simple as that. No, but just as a follow-up on that, I mean, you can understand if 1, 2, 5, maybe 10 MLAs jump. But if 40 out of 55 have jumped, and 12 MPs. Yeah, and 12 MPs, wouldn't that lend yourself to the criticism that you did not have a finger on the political pulse of your party? Well, are we responsible for the same situation in Jharkhand? Not the Shiv Sena, for sure. I mean, I understand there's a bow and arrow there too, but, there's a popular saying going around, I don't know how much of it is true, but Pannas Khoke is something I'm hearing all over Maharashtra. Now, I don't know what that means, but there was a minister who offered us on the steps of the Vidhan Bhavan saying, Tumhala paije ka. Now, if this is happening as blatantly as this, are we even pretending to be in a democracy today? But then the criticism is also that, Aditya, like you have been touring the state now, you're seeing response for your tours. Just like Aditya Thackeray is meeting party cadres almost on a daily basis. The criticism is that if you would have done this before you lost power, things wouldn't have been this way. I agree, but I mean, if you see the visuals that we had in the film before, I was wearing a mask and roaming around almost everywhere. Had I not roamed around, those visuals wouldn't have been available to people. Two, of course, just like I was a serving minister in the earlier government, most of these people, there were about 9 ministers who've become ministers again, were district guardian ministers. By the way, the ministers have got bungalows and cars, but not responsibilities for districts today. Some of them have not even taken responsibilities for the ministries allotted to them. But they were responsible for their own districts. So if they expected me to roam around in their districts, wouldn't that be infringing on, their work as well, and something they've blamed me? So they need to decide whether I was roaming around or not, and whether I was looking into their ministries and districts or not, and then blame me for something, not blame me both ways. A very strong statement came from your father just a few days ago that when he was battling, when he was on the hospital bed, that was the time when instead of praying for him, people were hatching plans and conspiracies against him. Do you feel bitter about it? I do. As a son, I do. As a party worker, I do. As a minister in a cabinet that actually earned praise for COVID management for its work, I do. And the inaccessible part for my father is true for this, because around November end, he had to undergo a surgery for his spine. And, I keep saying this again, that because of him, we got to know that politicians have a spine. Otherwise, a lot of us have been blamed for not having a spine and moving whichever way we want to. But that was a tough time for us as a family, because I was in Scotland for COP26. We won an award for Maharashtra's climate action as well. And suddenly there was a second operation that he had to undergo. And those were tough times, because after that surgery, he couldn't move much. He was not very mobile for a long time, for at least 2 or 3 months. And even when I went to meet him, I had to undergo 3 RT-PCRs and 3 rapid tests before I could meet him, because that was the situation and that was the bubble that he was actually operating through. That was the same time that COVID numbers were actually shooting high. And I remember coming down from Scotland, going right to the hospital after these 3 tests and seeing him in not a very, very mobile way. And he was obviously, on his hospital bed. And he couldn't, we are seen to be somewhere, demoralized. What will happen to our state? So I was managing the party affairs,
also passing on messages to the government, and through him, he was on his WhatsApp available all the time. He was having VCs with all the district collectors, ministers, MLAs for COVID management. But this was a time where these guys, the 40 Gaddars, were actually conspiring against my father. And, you know, as a son, as an MLA, as a minister in a responsible government, I think that was something that is not expected of. I've seen betrayals before, but I've never seen a betrayal of this low level ever before. Let me take this to... Sorry? Unforgivable? Is that unforgivable? I mean, it's not about forgiving or not forgiving. It's about your morality. It's about how you are as a human. You know, in Marathi, we have a term for it, vritti. This brings your heart out. This shows what you are made of. And for someone to ditch your own leader, someone who's given you a political identity, someone who's giving you party tickets, ministries that have never been shared before by the chief minister, to behave like that with someone who's given you everything in a time which is the toughest on him, it just brings your heart to the people, shows you your aura to the people. And if you don't belong to him, what loyalty will you have to the people and the state? Let me take this story forward. Obviously, now this is a long legal battle. You're fighting for this in the Supreme Court as well. There is a lot of speculation that the Shiv Sena could end up losing. Your Shiv Sena could end up losing. There's only one Shiv Sena. The other 40 are Gaddars. Okay. You could lose your symbol. You could lose your party name. And only then the BMC election will take place. What is your plan B in case you lose your name as well as symbol? Look, I mean, after 40 wounds on your back, I don't think there's much to fear about. You've lost everything. People who you trusted, people who you thought were yours, people who you could believe that you could close your eyes and hug and stand with all the time, have betrayed you. What more can you lose? The only difference I feel here is once, you know, this whole episode was done and we saw through what kind of people were there, what kind of humans or what kind of sanskars have happened on them, the culture really. We went out to the people asking them, will you support us, will you stand by us? And the response across Maharashtra has been tremendous. There's been a lot of love for Uddhavji, there has been a lot of blessings for me. The legal battles, however, are not about Shiv Sena anymore. It's not about one party. You've got to realize what has happened in our country. Is about a whole different kind of law in our politics. It's a whole different story and narrative in our politics. This is not going to be about one party. If today people start taking groups of 5, 10, 15, 20 people, hopping over and start claiming parties, it's not just dangerous for us, it's going to be dangerous for the political parties that are national in nature. Equally, it's going to be dangerous for any other regional party. This is about how our democracy is going to shape itself over the next 5 or 10 years. It's going to be about the other states that are in India. This is going to be about political stability in India and whether investors would want to invest in a story that is so politically unstable. I think this is the story and this is the narrative. It's about whether we would adhere to our constitution or not. And this, whatever judgment comes out, is going to be about our political story, it's going to be about our democracy, it's going to be about our constitution, not just the Shiv Sena. No, we had the Deputy Chief Minister earlier here, and one of the things, this was also an ideological battle. Obviously, you guys were the original Hindutva, as it were, as you claim. And he said that there is no difference between being a Hindu and Hindutva, and people like you don't understand it. So now that you've crossed over to the other side, and now some would describe you've been left in the lurch, how do you see yourself ideologically? Have you diluted your ideology? Is that why these 40 people left? What is his definition of Hindutva? He says there's no difference between being Hindu and Hindutva. It's one and the same. Okay, so what different have we done? You have supposedly diluted your version Exactly, of Hindutva. so that is my point, and that's what, we asked them. Going with the Congress and NCP, which were supposedly ideologically different than us, yes. We always have said we've never left our Hindutva. But our Hindutva is Raghukula Reet Sada Chali Aaye, Pran Jaye Par Jaan Na Jaye, Pran Jaye Par Vachan Na Jaye. And this meant that every promise that we've made electorally, because when we speak about Vachan, we speak about our duty to the people. As people in a political party, Prana Jai Par Vachan Na Jai means everything we do today has to be to fulfill whatever has been on our manifesto, and we've done that. Speaking about Hindutva, Uddhav Thackeray ji was the first political leader in recent times, in 2018, to have gone to Ayodhya and spoken about the Ram Mandir. After that, the court case started taking speed. We have gone there 3 or 4 times in a place where no political leader had gone in the past 2 decades, after the whole movement started. In Maharashtra itself,
as the government of Maharashtra, being with the Congress and NCP, we gave funds to 10 ancient temples, more than 100 years old, to be restored and repaired. Nowhere did the Congress and NCP oppose it. Because primarily they're not, against something. And we also did not say that we're going against Hindutva, we're going for Hindutva. This is our dharma, we're fulfilling our dharma. I went to Tirupati Balaji Mandir and I requested them to come to Navi Mumbai. We've given them space, and it is this arrangement that has actually delayed that, objected to it and delayed that by more than a month today. They were supposed to start off with their work in Navi Mumbai about a month ago. Through the BMC and through the tourism department, we were supposed to restore 10 ancient temples in Mumbai itself. It is this new dispensation that has put this on a hold. So what is the Hindutva we're talking of? Our last decision in the cabinet was to change the name of Aurangabad, a despotic ruler, to Sambhajinagar. We changed it from Osmanabad to Dharashiv. Yes, probably the difference is, while following our way of Hindutva, we did not incite riots in the state, and that is what the problem with them was. We took everyone together. Our Hindutva is about developing the state, living for the people, breathing for the people, serving the people, and that is what we have started doing. So Raghukula Reet Sada Chali Aaye, Pran Jai Par Vachan Na Jaye meant every promise being fulfilled. But and that is what we did. But Aditya, one of the vachans was also the mandate, is the criticism against you, that in 2019 the vachan was that we will come to power with the BJP, and that you betrayed that mandate. Who broke it first? Well, they say because you didn't get the chief minister's position. That was the arrangement. That was what was said in the press conference. All of you have covered the press conference in Worli. What does Sama Saman mean? Pad wa Jawabdari mean? Now let's not get into the analytical breakdown of that statement, but that was what it was. And today, of course, it has been negated by that party. It has been put forward by us. I think that is a thing of the past. But what we are dutiful towards is... Why do we get into the other past? thing, the other thing was to fight equal number of seats, but we were given 124 seats. Now, the problem with us as political parties, again, is we are fighting over the past. No one's fighting over the future. But they say the order has been restored now, and that is why we talk about the past. I wish them all luck, great happiness, but my only prayer to them is, if you want to be principled in politics, resign on the 40 seats of MLAs, resign on the 12 seats of MPs, contest again. Whatever the people decide will be the will of the people, because today we stand in the temple of democracy. All right, so I think we'll do some audience questions and then we have a rapid fire for you. So Shilpa is here, so Shilpa will help us through the audience questions. All right, request the respected ladies and gentlemen to raise your hands. I'll come to you. Do not ask your question without the mic. We need the audio to be captured, please. Yes. And one question please per go person, ahead. please. Introduce yourself and go ahead. My name is Vijay Dhamal. I am from Oryx, India. Sir, Aditya ji, मैं मराठीत पण विचारू शकता. ओके मी चालेल ना? सर मी तुमचे आजोबा प्रबोधनकारजी त्यांचं पण काही ऐकलेलं आहे. आणि मी लहान असताना बाळासाहेबांच्या सभा अगदी मी लालबागला राहिला होतो. प्रत्येक सभा मी अटेंड करायचो आणि त्यांचं भाषण ऐकताना अंगावरती काटा उभा राहायचा. मी त्यांचा फॅन होतो. मी प्रोफेशनल करिअर केला. मी आता व्हाईस प्रेसिडेंट आहे. परंतु तुमच्यामध्ये जे काही गुण आहेत, मी तुम्हाला असं पाहतोय की भविष्यामध्ये देशाचा नेता तुम्ही होऊ शकता. आज मी कन्हैया कुमार यांनाही मी फॉलो करतो, त्यांनाही मी ऐकतो. पण आज तुमच्यामध्ये जे काही क्वालिटीज आहेत, मी तुम्हाला अजून एक 7 ते 8 वर्षांनंतर तुम्ही फार मोठे नेते व्हा असाल ही मी अपेक्षा बाळगतो. सर, मी तुम्हाला फक्त माझा एक प्रश्न आहे. मुंबईमध्ये ट्रॅफिकचा फार मोठा प्रॉब्लेम आहे. तर तुम्ही मुंबईच्या ट्रॅफिकसाठी भविष्यामध्ये तुमच्यामध्ये काय प्लॅन आहेत सर? थँक्यू सर. Well, thank you for that question. If I may translate it for the audience, please, for just a minute. He has wished Aditya Thackeray well and has said that he will become as big a leader as his grandfather Balasaheb Thackeray, and has asked him about the roads of Mumbai and when will there be traffic and roads of Mumbai. Prabodhankar Thackeray, he was also big social reformist. All right. Thank you. तुमचा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे, कारण ह्याच्यावर मी खूप काम करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि ऑफकोर्स आपल्या प्रत्येक शहरामध्ये बघितलं तर ट्रॅफिक ही एक वाढता मोठा एक प्रॉब्लेम आहे. मुंबईचं जर बघितलं तर आत्ताची जी परिस्थिती आहे, आपले आहेत ते रस्ते पूर्ण लोकांनी भरलेले असतात, कारण गाड्या आहेत, प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअल गाड्या
बसेस भरलेले असतात, ट्रेन्स भरलेले असतात, सायकल्स, रिक्षाज, कॅब्स, ओला, उबर सगळं भरलेलं असतं. दोन गोष्टी ह्याच्यात महत्त्वाच्या आहेत. एक ऑफकोर्स चालण्यासाठी जागा, वॉकेबल फुटपाथ्स, आणि तो माझा मेजर फोकस होता. तुम्ही आत्ता पण प्रत्येक एरियामध्ये बघाल तर गार्डियन मिनिस्टर म्हणून, पालकमंत्री म्हणून मी पहिलं जे केलं ते MMRD असेल, म्हाडा, SRA, रेल्वे वगैरे सगळ्यांना आणि BMC प्रामुख्याने ह्यांना फंड देऊन अनेक ठिकाणी फुटपाथ हे जे पेवर ब्लॉक्स असायचे ते काढून एम्बॉस्ड कॉन्क्रीटचे केले, जिथे आपण चालू शकतो. रोड शुड बी वॉकेबल विदाउट क्लोजिंग युअर आईज और क्लोजिंग युअर नोज and having the fear to fall. So I think that was one of the most important thing for me. Pedestrians, zebra crossing असणं गरजेचं आहे, pedestrian refuge area असणं गरजेचं आहे. ह्याच्यासाठी आम्ही ब्लूमबर्ग, WRI वगैरे ह्या सगळ्या संस्थांबरोबर, C40 सिटीज आहे, क्लायमेट ग्रुप आहे, ह्यांच्याबरोबर बसून आम्ही प्लॅनिंग करायचो की वॉकेबल सिटी कसं होईल, चालतं येणारं शहर कसं होणार, हा एक महत्त्वाचा फोकस एरिया होता. तो असणं गरजेचं आहे. आणि दुसरं ऑफकोर्स पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, जसं रेल्वेज आहेत, टॅक्सीज आहेत, मेट्रो लाईन येत आहेत, बसेस, त्यापेक्षा सगळ्यात महत्त्वाच्या म्हणजे आपल्या पब्लिक ट्रान्सपोर्टच्या बसेस असतात. बिकॉज buses are such a thing, and I was discussing this with the director for strategy for transport for London, and he said more than any other mode of transport, buses and double-decker buses are the most important for any city, especially a city like London. They've got almost 9,000 buses. Our aim was to hit almost 10,000 looking at the bus to population ratio. Today, if you see, we've gone past the COVID numbers that used to use the bus. For us, the first and foremost thing in a city like Mumbai was flat fares. So the BST even today is 5 rupees for 5 kilometers, 10 for 10, 15 for 15, and anything beyond 15 kilometers is 20 rupees. The other thing we started doing is increase the number of buses. We were around 3,337 buses two and a half years ago. Today, we've increased that number to almost 3,500. Going beyond that, we're looking at every single bus in Mumbai to be clean fuel, so either electric or hydrogen. Two, we're looking at almost 900 double-decker buses coming in. So Mr. Gadkari actually inaugurated the first double-decker electric bus. That was what we had called for, and I'm so happy he inaugurated it. I hope he replicates that model across India. But Uddhavji was always keen on double-decker buses, and I was keen on electric buses. So we put together that, and we've got double-decker electric buses. Buses are something that you can actually move around, augment capacity, change routes at any time. तर मला वाटतं ट्रॅफिकवर हे दोन महत्त्वाची गोष्टी होती. तिसरी गोष्ट, कोस्टल रोड जो आपलं बनतोय साधारण 65% पूर्ण झालेला आहे. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक आहे, ती आम्ही वीकली बैठक घ्यायचो. उद्धव साहेबांनी पहिलं गर्डर लॉन्च केलं. जेव्हा आम्ही सरकारमधून बाहेर पडलो किंवा आम्हाला काढलं गेलं त्याच्यातून, तेव्हा 80% पूर्ण झालेलं होतं हे MTHL. नरिमन पॉईंट कफ परेड कनेक्टरची सुरुवात आपण करून दिली. त्याच्यात मी मागे लागून सगळे क्लिअरन्स वगैरे करून दिले. मला वाटतं टेंडर आता त्याचं निघालं असेल. दहिसर मीरा भाईंदर लिंक रोड ह्याची सुरुवात आपण करून दिली. माझा प्रयत्न होता की वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, ईस्टर्न फ्रीवे, AGLR, JVLR आणि SCLR ह्या तिन्ही 6 महत्त्वाचे जे रस्ते आहेत, 3 ईस्ट वेस्ट आणि 3 नॉर्थ साऊथ, पेडेस्ट्रनायझेशन, सिग्नलिंग आणि मूवमेंट ऑफ व्हेकल्स हे एक प्लॅन्ड मॅनरमध्ये व्हावं. आणि दिस वॉज वॉट आय वॉज फोकसिंग ऑन. होपफुली वेन एव्हर वी आर ग्रांटेड द टाइम टू वर्क अगेन बाय द पीपल अँड सिटीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, वी फोकस ऑन दॅट. थँक यू. All right, we can have a couple more audience questions here. Hi, I'm Aditya Pratap. I'm a practicing lawyer. Recently, I had gone to the Bhoivada court and I passed in front of KEM hospital. I see really the heavy crowds and the bad state of the poor people outside KEM hospital. BMC has more than 80,000 crores in budget. Every year, thousands of crores of flowers and others. But yet, in the last 20 years, we have not seen a single new BMC hospital coming up. My driver, either anyone, they go to So there are 4 that have already come up recently. Which ones? The ones in the suburban centers. There are 4 that have come up, and there are 4 that are coming up again. Okay, that's good. But then it might need So I'll more. tell you, I get your question. Thank you, sir, for thank you, Aditya, for that. Yes, and just one more add-on, that you have so, these days you have BMC has so much money that you can actually set up a Medanta for the public. Like a heavy-duty MRI machine costs 12 crores for the BMC's loose change. Like, do a project like that. So primarily, again, the whole understanding of BMC's fund has to be much deeper than just seeing the 80,000 crores, because a lot of people look at Mumbai as the hen that lays the golden egg. When we took over the BMC in 1997, the BMC was in a deficit of almost 490 or 500 crores. From that, financial planning of Shiv Sena's governments in the BMC has led us to have 80,000 crores in our savings, and each penny is accounted for. Each penny has been allotted to other things and to various things across the city. For example, the coastal road that we are making as a part of the BMC,
is a 12,500 crore project without escalation, and most importantly, every penny is being used there is citizens' money. So once we have savings like this, the BMC is not going to have a single toll on that coastal road. Multiple things that are coming up across the city are a result of this saving. For example, in 2017, and I'll give you the latest figures very soon, but COVID has distorted those figures in the healthcare sector because of the amount of equipment that came in. But in 2017, the BMC had 13,756 beds in its hospitals. But the daily patient input to these beds was almost 80,000 people, not just from Mumbai, but all across India. The BMC's 90% of these health treatments are free from central government, state government, and BMC schemes. We have some of the best doctors, we have some of the best medical equipment, and which is why the entire country really, from be it an urban center or a rural center, they come to Mumbai for treatment and they go into BMC's hospitals. But of course, when you have people coming in more than what beds are available or more than what doctors or nurses are available, you will have an overflow and you will have a problem with more than one person or two people coming to the same dispensary, for which we have started planning with dispensaries across Mumbai, increasing them, doubling the amount to almost 1,000 dispensaries across Mumbai, which we already had, but this is going on, free healthcare. Two, we need to level the way our hospitals go. Peripheral hospitals, centralized hospitals, you need to have a radial pattern of planning this, and this is what was going on in the past 2.5 years, along with COVID management. And yes, we have world-class hospitals, we haven't promoted them, and that's where we fall back. So maybe some of the 80,000 crores could have been used for better promotion and ads on TVs. We fell back on that. No regrets about that, though. All right, a couple of more audience questions. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. मी डॉक्टर भूषण जाधव. मला एक राजकीय प्रश्न विचारायचा आहे की जेव्हा बाळासाहेबांनी म्हटलं होतं, आपल्या आजोबांनी आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेंनी, की मी माझ्या शिवसेनेची काँग्रेस होऊ देणार नाही आणि ज्या दिवशी मला काँग्रेसबरोबर जावं लागेल त्या दिवशी मी हे दुकान बंद करेन. तर जेव्हा तुम्ही काँग्रेसबरोबर युती केलीत, अनफॉर्च्युनेटली म्हणजे तुमच्याबरोबर ती सिच्युएशन, सडनली तुम्हाला ती सिच्युएशन आली होती युती तुटल्यामुळे, तर जेव्हा तुम्ही युती केलीत आणि जेव्हा काँग्रेसला म्हणजे सोनिया गांधींना भेटायला दिल्लीला गेलात, तेव्हा उद्धवजींना आणि तुम्हाला मनातनं दुःख होत होतं का? आणि आता याच्या पुढचं एक मी असं विचारतो की तेव्हा सिच्युएशन अनफॉर्च्युनेटली अचानक आली होती, आता तुम्हाला पूर्णपणे माहिती आहे की आपण युतीमध्ये नाही आहोत, तर इथून पुढच्या इलेक्शन्स किंवा आता जशी पूर्वी बीजेपी बरोबर तुमची लॉंग टर्म युती होती, तसं इथून पुढच्या सगळ्या इलेक्शन्स तुम्ही काँग्रेसबरोबर तुमच्या आयडियोलॉजीला कॉम्प्रोमाइज करून काँग्रेसबरोबर जाणार का? एक तर तुम्ही कसं ठरवलं की आम्ही आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज केली आहे? काँग्रेस बरोबर युती केली ना? नाही, पण आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज कशी केली आपण कसं ठरवलं? जर आता समजा आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमाइज म्हणजे बाळासाहेबांचं जर आपण विधान घेतलं की मी काँग्रेस बरोबर, विधान आणि आयडियोलॉजी मध्ये फरक असतो. पण बाळासाहेब ठाकरेंची मैत्री इंदिराजींबरोबर होती, त्यांनी पण पाठिंबा दिलेला, पण त्यांनी कधी युती नव्हती केली. नाही, आपण चुकतोय. थोडा इतिहास बघा आपण, आणि कॉम्प्रोमाइज काय केलं हे नक्की आपण सांगा. आपण कुठच्याही पक्षाचे असू शकता, त्याचं काही हरकत नाही. मी अप्रिशिएट करतो, मी उद्धवजींना बेस्ट सीएम मानतो नक्की, पण आपण मला कॉम्प्रोमाइज कसं केलं मला सांगा. कॉम्प्रोमाइज या दृष्टीने म्हणतोय की ज्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे स्वतः म्हणतात की मला जेव्हा काँग्रेस बरोबर जावं लागेल, आयडियोलॉजी म्हणजे बाळासाहेबांचं वचन हे आयडियोलॉजी नाहीये का? वचन नव्हतं, ते विधान होतं. आणि हिंदुत्व बाळासाहेब ठाकरे जे काही त्यांनी भाषणं केलेली आहेत ही आम्हाला पण माहिती आहेत. आम्ही घरातल्या घरात त्यांच्यासोबत वाढल्यानंतर कोणी आमच्यावर हमला जर केला, कोणी महाराष्ट्र तोडायचा प्रयत्न केला, कोणी शिवसेना मोडायचा प्रयत्न केला, तर त्याला उत्तर कसं द्यायचं हे आम्ही त्यांच्याकडून शिकलेलो. त्यांचंच रक्त आमच्यामध्ये आहे. नाही, पण मला एवढंच म्हणायचं. I think we can yeah. Thank you for your question. I thank you for your question. And thank you, Aditya, for being sporting. We'll take the next. For our audience, let me please sum it up. Shilpa, for our audience, let me please sum it up. Right now, the gentleman asked a question about, whether there was a compromise with Balasaheb Thackeray's ideology. Oh, sorry, you're translating all of it. Sorry. And whether after going with the Congress, there was a compromise on Balasaheb Thackeray's ideology, to which Aditya Thackeray ji responded saying that there was no compromise on ideology and they still continue to walk on the path as suggested by Balasaheb Thackeray. Sorry, one more thing. उलटा आम्ही त्यांनी जे त्यावेळी शब्द दिलेले हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी, जे गेल्या मागच्या 5 वर्षाच्या सरकारमधून नाही करू शकलो, ते राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आमची महाविकास आघाडीमध्ये करू शकलो. संभाजीनगरचं नाव संभाजीनगर केलं, धाराशिव केलं, अयोध्येबद्दल बोललो, ह्या सगळ्या गोष्टी तर केल्या आम्ही. तर कुठचं कॉम्प्रोमाइज केलं आम्ही?
So thank you, Aditya Thackeray. Aditya Thackeray just said Namaskar. that, he did fulfill the dreams of Babasaheb Thackeray by going with the Congress and the NCP. He fulfilled the promises that were made by the Shiv Sena to Maharashtra, may it be the renaming of Aurangabad to Sambhajinagar or Dhara Shiv from Usmanabad. Thank you. Namaskar Aditya ji, my name is Mansoor Ali. I'm a founder director of a company called Amfa India. We manage some of the leading names and institutions in this country on pandemic times on air quality solutions. My question to you is that you have been acknowledged internationally for your work in sustainability and climate change. Now the government has changed. We just had the deputy CM of the state. What is the one thing which you believe that your initiative which you want the current government to carry on with a new setup? I'll take your question, but I don't call this a government, I call this an arrangement, but okay. I think, look, it's very important for us to understand whatever's happening around the world today is a huge playing factor on the economy, and what is happening is climate change. You're seeing floods, you're seeing hailstorms, you're seeing, heat waves, you're seeing almost everything across the country. Even today, when we speak about Europe, the winters are especially going to be tough on Europe, looking at the energy crisis and climate change. If you look at our own country, right now we're struggling, and we've been asking this government to declare a package for the farmers. We're asking them to declare what is called Ola Dushkal in Marathi. Unseasonal rainfall, heavy rainfall, all of this is a part of climate change. We need to move ahead on climate action. And this is something, again, that is going to go beyond ideology. This is going to go beyond party lines, because whoever's running the city, whoever's running the state or the country, we will keep changing as parties, we will keep changing as, ideologies that govern the country. This whole system of democracy is very dynamic. But what is not changing is what we will face as, part of what is happening to our world today, what is happening to our planet today. The Mumbai Climate Action Plan, similarly the Pune Climate Action Plan, Solapur Climate Action Plan, Thane Climate Action Plan, these are things that we need to go on, stick to, because finally we as the human race are going to bear the brunt of what is happening to our planet. We believe that we can control nature, we can control environment. We believe, "Arey, ye kya itna jagah to clear karna hai, usme kya hai, cut these trees, let's build a building here, let's clear this, let's build a car shed here." But we don't realize that we're going to damage our future with such actions. And like I said right now, even today, most political parties in our country, most of us in our country today, we're fighting over what happened in the past. What happened 50 years ago? Was this person right or wrong? What he said was right or wrong? Who is fighting for our future? Nobody is. I think climate action is about our future, because for a country like us, where, for a country like India, where you have cities growing on a huge scale, but you also have a huge agrarian economy, where you have, the economy right now, we don't know what is happening to it. There's unclear picture over the economy. We know that unemployment is on the rise. We know that there's also, different economic standards of rating us. The biggest hard-hitting factor to India today is going to be climate change. I think we need to start acting on it right now. We don't have the luxury of time to think about it. All right, I think we can wrap with the audience questions. Thank you very much to the audiences for your questions. Now we have the final climax act, which is the rapid fire. So Aditya, are you ready for the rapid fire? If I say no, I'm excused from that. No, I'm afraid you don't have an option. So let's start. The one song that's playing on loop in Aditya's playlist. Currently, I don't have a playlist, because by the time you head home, you're wanting to read something and sleep. So, all right, the book that he's currently reading. Currently, I'm reading a book on Chhatrapati Shivaji Maharaj. It's just come in someone's sent. There's another book that I'm reading, which is also very fascinating. It's this book by Henry Kissinger on his 6 favorite leaders around the world. It's on leadership. So I think these 2 books I'm reading parallelly. Aditya's most favorite food, since it's Ganpati season, most favorite food? I have a huge sweet tooth problem, but I've been able to have, knock off little bits of pedas at because I've almost visited 160 different mandals and households, so I've been able to have 160 small drops of, sweet. What is the one thing that Aditya Thackeray cannot do without on a daily basis? Tough, because the thing is, there's one thing, of course, reading. I think that really, reading or watching something that is
information consuming, because you've come to an age where information is available 24/7 around you, and if you don't have certain information in front of you, you sort of feel that you've missed out on something. So either watching a documentary or a good film on your phone, or reading, or having a conversation which is sort of, giving you some information, I think that is something I miss out if I don't do that. The first app you open on your phone in the morning? It's definitely not WhatsApp, so a lot of people complain about that. But I guess Twitter or Instagram. Twitter or Instagram. The last movie you watched? Top Gun. Top Gun? Mission Yeah. Impossible. Sorry, Maverick. Top Gun, yeah. Aditya's most favorite actor in Bollywood, both actor and actress? I think actor would be, of course, Mr. Bachchan, because Sure. I think he's someone who I've seen very closely as family also, and someone who, puts that whole larger than life and yet the character on screen. So I think him for sure, yeah. Actress? I haven't thought of. Really? Avoiding all controversies. We'll give you all the time for the rest of the evening. Why I am don't you not think giving of you one? headlines at all today. Well, as someone who has a lot of filmy friends, that's difficult to believe. I mean, you can have a lot of friends, right? And you have friends in cricket, you have friends in films, just like my grandfather had friends in films and cricket. But, and you have friends in different political parties, but you can't ask me who's the political star for you from that party. Okay, last couple of questions. What does revenge look like for Aditya Thackeray? I don't believe in revenge. I think we've got to move ahead of that mindset of revenge. I think revenge is about forgetting the past, moving forward, and getting all the love and blessings from the people. Because I think if you get stuck in revenge, that's not something of an energy I really want to attract. It's going to keep hitting you. I really want to be out there, be loved and blessed by the people for the work I do. And if I keep getting engaged in revenge, someone who I've taken revenge against is going to take revenge against me at a certain point. I keep away from that. I love working for the people. I love being engaged in that. All right, one last question. I guess it's the million-dollar question. It's a question that all of us here in the audience also wants to know. When are you getting married? The answers before this were easy. I could give you better headlines than that. Aditya, one question from me. Mama's boy or Papa's boy? It's a balance. It's a balance of both. I think, obviously, I've grown up very closely with the both of them. So I've traveled and toured with my father a lot, seen a lot of the state with him, learned a lot of my political ideology, learned a lot of my thoughts, framed them in his process of, how things should move, and seen him as a leader and a father both. But of course, when you have to, discuss something very passionately from the bottom of my heart, I think then I go up to my mother. Yeah. Do you consult her for any of your political decisions, and is she happy with your political journey? So when I was getting into politics, her first advice was, don't get in there. It's a world which is, not really, you need to be thick-skinned for that, you need to be strong for that. And she asked me, are you strong enough for that? Because she's seen this whole political story of betrayals before. She's seen it very closely. She's at a certain point, and she keeps away from politics. She's shy from politics. But she's been also publicly sort of dragged into it or blamed for a lot of things which she's not been responsible for. She's someone who's remained behind the scene and cared for the family. But I think that's where her perception of politics is. And, that's the advice she gives, that you need to be strong if you're in this field. Aditya, the poet's favorite poem. And you have to recite a couple of lines for I us. think Yes. of late I have been, reading Chitta Jite Bhaya Shunya, Where the Mind is Without Fear, by Gurudev Rabindranath Tagore, very often trying to see the nuances in it and to see the layers in it. I think that, and the other one, purely for the words of the poem, and not, I'm not going into Rudyard Kipling's background or history, but I think that also means a lot when you read that poem. So these two poems really hit me hard whenever I read that. All right, ladies and gentlemen, Aditya Thackeray, can we have a round of applause, please? Thank you. Thank you. Thank you so much for that engaging session. I request all Mr. P. Saktivel, the Group CHRO of Network 18, to present a memento to Mr. Aditya Thackeray.
right, I request all of you to please remain seated. We just have a small closing ceremony. I request you all to please be seated for another 2 minutes. With that, we are coming to the close of this town hall. I'd once again like to thank our sponsors. This event is co-presented by Reliance Industries Limited and Axis Bank. Associate sponsors Hyundai Kona Electric and 99 Acres. We just take a moment, and then I'd also invite Smriti Mehra, the CEO of Business Cluster Broadcast News, for a vote of thanks. Smriti Mehra, the CEO of Business Cluster Broadcast News, for a vote of thanks. Smriti, all yours. Ladies and gentlemen, a very good evening. It is my privilege to thank you all for joining us for the CNN News 18 Town Hall today. We at CNN News 18 and the entire Network 18 group would like to thank our esteemed guest speaker. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि many people also say this कि आप 5 years CM, longest serving BJP chief minister, second youngest chief minister, now DCM. They see it as a come down. You didn't want to be part of the government. How did that happen? वो कैसे हुआ? देखिए आप कहते हैं कि कुछ लोग दखल नहीं करते हैं, तो क्या उन्होंने दखल किया? ना, मैं आपको बताता हूँ. देखिए ऐसा है कि आपके चैनल में सीनियर एडिटर भी है, कभी एंकर भी बन जाते हैं, कभी स्पोर्ट्स शो भी होस्ट कर देते हैं जी, कभी रात का 10 बजे का शो तो आपका बहुत पॉपुलर है, वो भी आप उसको होस्ट करते हैं. तो एक टीम होती है, हम टीम बीजेपी के कार्यकर्ता है. तो टीम बीजेपी में जो जिम्मेदारी मिले, देखिए हम ऐसे ऑलराउंडर है कि हमको नाइट वॉचमैन करके भी भेजोगे तो सेंचुरी मारेंगे, बिना सेंचुरी मारे वापस नहीं आएंगे. तो टीम बीजेपी को आवश्यकता है. हमारे नेताओं ने कह दिया कि भाई आपको सरकार में जाना है और डिप्टी सीएम बना है. तब तक ये बात जरूर है कि मैं मान रहा था कि मैं बाहर रहकर काम करूंगा, लेकिन जब पार्टी ने कह दिया तो चला गया. अब चला गया तो बस जुड़ गया हो, लग गया हो, अब करके दिखाऊंगा. पर आपको मन नहीं खटका थोड़ा कि क्यों ऐसा सब करने को कह रहे हैं? थोड़ा कुछ देर के लिए आपको लगाओ कि व्हाई आर दे आस्किंग मी टू डू दिस? उसके बाद भले आपने कहा कि चलिए जो कहेंगे करेंगे. देखिए पहली बार तो ये है कि एकनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात तो मुझे पहले से पता थी, ये तय थी, क्योंकि इसको तय करने वाले जो लोग थे उसमें से एक मैं था. ये प्रपोजल ही ओरिजिनली मेरा था और पार्टी से मैंने बातचीत की थी और पार्टी ने उसको मान्यता दी थी. तो इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं थी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला हूं. हाँ, उस समय मैं ये मानता था कि मैं बाहर रह के काम करूंगा. तो पार्टी ने मुझे ये कहा कि बाहर रह के सरकार नहीं चलती है. और पार्टी ने बहुत सटीक बात कही. उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हम नहीं तैयार करना चाहते. एनएसी जैसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. तो इसलिए हमको ये लगता है कि सरकार को ताकत देने के लिए आपने सरकार में जाना चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है, जो पार्टी कहेगी. देखिए मैं मुख्यमंत्री क्यों बना, पार्टी ने बनाया इसलिए बना ना. करेक्ट. तो देवेंद्र फडणवीस इस नाम को वैल्यू क्यों है? वो वैल्यू केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया. तो फिर वही पार्टी या वही नेता जिन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, वो कहते हैं कि पार्टी के हित में आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, तो ये तो मेरा सम्मान है. वो तो ये भी मुझे कह सकते हैं कि भाई आपने बहुत कर लिया, अब घर चले जाओ, तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन उन्होंने सम्मान के साथ ये कहा कि आप संभाल सकते हो, आप जाओ. तो मुझे लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, 5 मिनट ये मेरे मन पे बोझ जरूर था, और इसलिए था क्योंकि मैं ये अनाउंस कर चुका था कि मैं कोई पोजीशन नहीं लूंगा. ये अनाउंस कर चुका था, इसलिए मेरे मन पर बोझ था. लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमारे लिए एक, देखिए किसी को पसंद नहीं आएगा शब्द, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं ईश्वर का आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री जी जैसे नेता हमको मिले हैं कि जो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ा बनाते हैं. और जिस प्रकार से इस बात को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से 4 शब्दों में, 4 अल्फाजों में एक्सप्लेन कर दिया, मुझे लगता है कि उसके बाद यह सवाल खत्म हो गया कि देवेंद्र फडणवीस क्यों उप मुख्यमंत्री बना.
2.5 साल के बारे में आपने पूछा तो मैं इतना ही कहूँगा कि 2.5 साल में क्या हुआ, ऐसा अगर किसी भी आम नागरिक को हम पूछे तो उसको पता ही नहीं है क्या हुआ। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हमने महाराष्ट्र में शुरू किए थे उनमें से कुछ को बंद कर दिया गया, बाकी कुछ चल रहे हैं। एक भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ महाराष्ट्र में। हाँ, एक बात ज़रूर हुई और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि महाराष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत सटीक माना जाता था, और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जो पुलिस है और मुंबई की पुलिस है, इसका देश और दुनिया में बोलबाला था। किंतु जिस प्रकार से घटनाएं महाराष्ट्र की पुलिस में घटी और होम मिनिस्टर को जेल जाना पड़ा, और जिस प्रकार से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का स्कैम हुआ, इससे निश्चित महाराष्ट्र के पुलिस की प्रतिमा पर एक दाग लगा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, दाग लगाने को तो 1 साल लगता है, पर दाग मिटाने को कई साल लगते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग पीछे गए, न कोई नया निवेश आया, न कोई गति बढ़ी। तो कुल मिलाकर मैं ऐसा कहूँगा कि पिछले 2.5 साल में जो सरकार थी वो सरकार अपनी कोई अचीवमेंट बता नहीं सकती है। बोलने को तो 4 चीज़ें वो बोलेंगे, पर एक भी ऐसी चीज़ जो महाराष्ट्र को आगे ले जा पाए ऐसी उस सरकार में नहीं हुई। केवल भ्रष्टाचार और महिमा मंडन खुद का, इससे ज़्यादा वो सरकार कुछ नहीं कर पाई। मुंबई पुलिस कमिश्नर